गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग का उत्साह और आप लोगों की प्यास साफ हम लोगों को आपके फीडबैक में और आपके क्वेश्चंस के द्वारा दिख रही है। वाकई आप लोग ट्रूथ सीकर हैं जो अपने मन में इतना सब कुछ रखकर आगे चल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसके आंसर के लिए हमने सर को लिस्ट भेज दिए हैं, पर कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं और इतना टाइम नहीं है सर के पास कि वो सभी का आंसर दे पाए। तो जो थोड़े बेसिक टाइप के हैं जिसको शायद आप लोगों ने सही तरीके से नहीं सुना है या नहीं समझा है, तो उन सब के आंसर मैं कल और परसों दूंगी। यदि मुझे कोई थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं बिल्कुल सर से कंसल्ट करके ही मैं आपको सही उत्तर देने की कोशिश करूंगी। जितने सर को हमने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे नहीं लगता कि वो आज हो पाएंगे, और सर का मन है कि वो आप सभी लोगों से एक्सपीरियंस सुने, क्योंकि जब कोई मास्टर विजडम देता है तो वो देखना चाहता है कि कितना लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है, चाहे आपके एक्सपीरियंस हो चाहे आपके प्रश्न हो। तो दुविधा ये है कि आपके प्रश्न इतनी तादाद में आ गए हैं कि हम परेशान हो गए कि हम कैसे सर को कन्विंस करें कि वो उनके आंसर दें। तो जितना हो सकेगा सर आंसर देंगे और बाकी मैं उनसे कंसल्ट करके आप लोग को बताऊंगी। और जो बेसिक हैं क्वेश्चंस उनके आंसर तो मैं स्वयं ही दे सकती हूँ। तो मैंने काफी फिल्ट्रेशन किया है आप लोग के क्वेश्चंस में, तो देखते हैं आज कितना हम कवर कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर जैसे जुड़ेंगे हम मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। कल कई लोगों ने एक्सपीरियंस बताए। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग जितना हो सके शॉर्ट में बताइए, जितना हो सके सीधा अपना नाम बताइए, अपनी सिटी का नाम बताइए। माही, हाँ जी, कितनी देर से म्यूट है? आपकी तो आवाज आ रही है। यहाँ से मुझे म्यूट दिखा रहा था, इसीलिए मैं हाँ, बोली। वो कई बार हैंग हो जाता है ज़ूम, दैट इज व्हाई मे बी। अच्छा चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो सर भी आ गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते दोस्तों, आखिरी दिन है, चलो मेडिटेशन शुरू करते हैं। So we will do 45 minutes meditation today. So drink some water, darken your room, sit comfortably, close your eyes and let's start the meditation. 45 minutes. आज सिर्फ 45 मिनट ही हम ध्यान करेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। पानी पीकर आप ध्यान के लिए बैठ जाएं।
5, 4, 3, 2, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you're ready. Drink some water, stretch your body, and relax yourself. सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसकी सुन्नता को दूर कर दीजिए। So I have received some questions and I haven't seen the questions so far. Neetaji has sent this morning. So I'll just share the questions and just take it dynamically. So first I'll share the questions what I have and then I'll listen to people's experiences and their questions. तो फ्रेंड्स, पहले सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उसके बाद ही आप लोगों का एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो अभी आप लोग हैंड रेज मत करिए, पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देंगे। Okay. So the first one relates to desire. You explained about the outside and inside desire. Do these desires prevail through all the 7 bodies, or the desires connected to soul evolution? Do outside desires reside in lower chakras and inside desires in higher chakras? Okay. So when it comes to desires, you have to understand our desires are fundamentally because of the sense organs. The external, because of the sense organs, we get, through the sense organs, we connect it to the outside, the Prakriti, the environment, the nature. And so the desires come through your sense organs, like your eyes, your nose, your tongue, and your ears. The inner desire is only one desire of self-realization, enlightenment. So does this desire prevail through all the bodies? Yes, these desires are there in all the bodies until the final, see, we have 7 bodies. And the causal is where the soul resides. So for a normal person who is stuck in the desires, he will go through the causal and then he takes another incarnation. So again, he goes through the causal, again, he takes another incarnation. But
when man is developed, when his consciousness is developed, then he goes through the supracausal, which is nirvanic body, buddhic body. So for a normal man, mostly his outer desires are dominant. But once the question of self-realization, once the seeking, the search starts, then he becomes aware of the desires. Then his focus is on the inner desires. So for your question, does the desires prevail through all the body? Fundamentally, the desire for enlightenment is always there. So it is there in all the bodies. So you cannot understand, you cannot correlate desires with the bodies. So you have to understand that your feelings, your emotions are from your emotional body, which is which goes into the astral worlds, your emotional body. And in the mental worlds also you have certain desires. So basically, you can say, for the sake of understanding, that your desires are there with you all the time. Okay, because what desires you have is coming back to you in the next lifetime. So the desires are there with you in all the bodies. So that's the simple answer. But as you go through the nirvanic buddhic bodies, then the desire is only inner desire. Okay. And the next question, are these desires connected to the soul evolution? Of course, yes, it is connected. The more your soul is evolving, the more you drop the desires which is coming from outside, the more your focus is on the inner desire. And then another question, do the outside desires reside in lower chakras and the inside desire in higher chakras? No, this question is not related, because the chakras are in the etheric body, in the energy body. The chakras relate to how you think, how you respond. So that is where your chakras are related to. So if the chakra can be excessive or deficient, so that all relates to how you respond to any given situation. Okay, so it's nothing to do with your desires. Okay, you can translate this. जो इच्छाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हमारे बाहर की, सर क्वेश्चन मैंने या नहीं लिखा है, बाहर की और अंदर की इच्छाएं अलग होती हैं क्या, हमारे सभी बॉडीज में रहती हैं? तो सर ने कहा कि हमारी जो भी अंदरूनी और बाहरी इच्छाओं के बीच में फर्क जानना चाह रहे थे, और क्या वो सभी हमारी बॉडीज में रहती हैं, क्या वो हमारे सोल इवोल्यूशन में प्रभाव डालती हैं, क्या ये हमारी जो डिजायर हैं, जो सांसारिक डिजायर हैं, वो लोअर चक्र में है, और हमारी जो अच्छी इच्छाएं हैं, जो हमारी इनर डिजायर है, वो क्या हमारे हायर चक्र में रहती हैं? तो ठीक है सर, बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपके सेंस ऑर्गन के द्वारा मिलती हैं, जो हम प्रकृति को देखते हैं, सुनते हैं, और उसके द्वारा हम प्रेरित होते हैं और हम इच्छाएं करते हैं। तो इच्छाएं हमेशा बाहर से ही आती हैं, और ये सभी हमारी बॉडीज में रहती हैं। हमारी आत्मा कॉजल वर्ल्ड में रहती है, अर्थात कॉजल बॉडी के में रहती है। तो वो सारी इच्छाएं हमारी कॉजल वर्ल्ड तक के जाती हैं, और फिर से हम उन इच्छाओं के अनुसार जन्म लेते हैं। पर जब कोई व्यक्ति डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, और वो अपनी बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी को टच करता है और उसमें जाता है, तब ये यानी कि सुप्रा कॉजल वर्ल्ड में, तब उसकी जो बाहर की इच्छाएं होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और आप ऐसा कोरिलेट नहीं कर सकते कि ये बुद्धिक बॉडी की इच्छा है या किसी और नीचे वाले बॉडी की इच्छा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी इमोशनल बॉडी में रहती हैं। इमोशनल बॉडी अर्थात एस्ट्रल बॉडी, इसके द्वारा ही आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। हमारे मेंटल बॉडी में भी कुछ डिजायर्स होती हैं, ये सभी हमें हमारे साथ सभी टाइम में रहती है, चाहे हम यहाँ रहें या चाहे दूसरे वर्ल्ड में रहें, पर सिर्फ निर्वाणिक और बुद्धिक बॉडी में नहीं रहती हैं। और ये सभी इच्छाएं हमारे विकास पर प्रभाव डालती हैं। यदि आपके पास सांसारिक इच्छा रहेगी तो आप उनको पूरा करने के लिए अपने
कामों को रोक देंगे, अपने एनलाइटमेंट के पाथ को डिले कर देंगे, तो ये इच्छाएं बिल्कुल आपके प्रभाव डालती हैं। और जो क्वेश्चन पूछा था करके कि पता नहीं आखिरी वाला क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे चक्रा के एथरिक बॉडी में रहती हैं। एथरिक बॉडी में हमारे चक्रा होते हैं, तो उसमें हमारी ये सारी इच्छाएं रहती हैं। और ये मत सोचिए कि ये इच्छाएं आपको ये इच्छाओं के द्वारा ही चक्रा बैलेंस या अनबैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं या असंतुलित होते हैं। इसके बाद सर लास्ट वाला क्वेश्चन। So I think मैडम ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत हो रहा है। मैंने बोला कि डिजायर सभी बॉडी में होता है, whether it is internal desire or external, even to get enlightenment is also a desire. So the desires will be there in all the bodies. तो स्किप हो गया होगा सर। आखिरी में जो वो क्वेश्चन था कि चक्रा बैलेंस है या नहीं, फिर वो No, it's not related to that. I said it's not related because your chakra gets unbalanced based on how you respond to a certain situation. Right? Whether it becomes excessive, deficient, you know, you are escaping from the challenges, then it becomes deficient. You are overdoing it, you are reacting it in a certain way, then it becomes excessive. So it is not related to the chakras. तो मैं थोड़ा सा सुधार करूंगी, शायद कुछ डिस्टर्बेंस के कारण मैं नहीं स्किप हो गया था एक दो मेरे सेंटेंस। तो सर ने कहा कि कोई भी इच्छा हो, चाहे सांसारिक हो चाहे एनलाइटमेंट की भी इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा भी इच्छा है, वो भी हमारे सभी बॉडीज के में रहती हैं। तो कोई भी इच्छा हो वो हमारे साथ कॉजल वर्ल्ड और सुपर कॉजल वर्ल्ड तक के जाएंगी, पर जो भी आप सोचते हैं, जो आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अनुसार आपके चक्रा संतुलित या असंतुलित होते हैं। वहां पर डिजायर नहीं, चक्रा का बैलेंस और अनबैलेंस आपके प्रतिक्रिया और आपके सोचने पर डिपेंड करता है। ठीक है ना सर? Right. So I think some of these questions are making the things more complicated than making it easy. So let me put it in a very simple way that, you know, you have to be aware of your desires. That's the very simplest thing. Become aware of your desires, and in that awareness state, you decide what actions to take. So to become aware of your desires is the point. So here awareness is the key. You cannot keep on having desires. So the very essence, the very reason I explained about the desires, the fundamental reason is become aware of your desires. Because your true desire is self-realization. But the desires from the external world will compete for your attention. So as long as you become aware of the desires, then you know what to do. So then you will not get stuck in that loop. So the very idea, in the very first class I spoke about the desires, is for you to become aware of, you know, attraction towards the opposite sex, attraction towards the possessions, money, wealth, attraction towards name and fame, attraction towards power. You know, these are all the things which you have to be aware of. And don't complicate by thinking about desires, and don't complicate yourself. Just keep the things simple. Become aware of your desires and always focus on the priority. The priority is very important. What is the priority in life? Again, I quoted the Buddha's quotes. Your desires has to be the right desires, right views, right intentions, right desires. Then you are helping yourself. If you don't have the right desires, then you have to pay the consequences. Now, what is a right desire? What is not a right desire? That depends on your soul evolution. That depends on at what state of evolution you are in. If you are a baby soul or an infant soul or a young soul, your desire is only on money, name and fame, property. But if you're an evolved soul, then your desires are for enlightenment. You know, I want to come out of all the suffering, and I want to know the truth. I want to know myself. So when that desire is there, when you have the desire to know myself, then be aware that the other desires are also competing. So become aware of that.
And once you become aware of that, you know what to do, what not to do. So fundamentally, it boils down to becoming aware that yes, there are desires within you coming from the past, but you act on the present moment because the present moment is in your hands. So be aware of the present. Don't forget about the past. Forget about the future. Don't worry about the future. Forget about the past. This moment is in your hands. So once you understand that this moment, this present moment is the only reality in front of you. So what best you can do to help yourself is to become aware of your desires and see what is needed for you, what is helping you, what is not helping you. Become aware of it. That's all. I'll give yesterday also I gave an example. Today I will quote an example. This happens to most of the meditators also. Once they come into the path of meditation, they will be meditating in the beginning. Yes, they are very serious, they are very intense, they are meditating. But after 6 months, after 1 year, slowly their meditation intensity goes down and they will have the desires. Oh, I want to travel around the world. Oh, I want to have this new dress. Oh, I want to buy this new things. I think I need to have some bank balance in my bank. Or, oh, I want to be a good teacher. I want to get the recognition, name and fame. My poster should be there in the flyer. I want to become a teacher. I am a teacher. The spiritual ego comes in. Or you say, oh, I need third eye experiences. I want to have siddhis. I want to feel special. You're going behind powers. Or naturally you feel attracted to the opposite sex, or you don't feel attracted. The opposite sex comes to you because when you are meditating, you're so calm, so serene. Then the opposite sex who are vulnerable, they will come to you for counseling or advice or suggestion. Then you may feel attracted to them. So be aware that in the path of meditation, these things come to you. So the moment you become aware of it, then you tell yourself, okay, my core desire is meditation, I better focus on that. My core desire is self-realization, I better focus on that. Okay, yes, I do have the desires of money, name and fame, power. I do have all those desires. I acknowledge it, but my core desire is enlightenment. So I better focus on that. So this is the way you are helping yourself. Okay, is it simple, straightforward? Yes. Yes. तो सर देख रहे हैं और मैं भी आश्चर्य कर रही हूँ कि आप लोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं. मुझे ऐसे लग रहा था कि बकायदा आप लोग ने बैठ के सोच के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बहुत सी चीजों को. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिलीट किए हैं. तो सर कह रहे हैं कि आप लोग जो ये बात ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ अपने इच्छाओं के प्रति अवेयर होइए. आपको समझना चाहिए कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करना चाहिए. आपके लिए अवेयरनेस ही की है. आपके पास बहुत सारे डिजायर होंगी, परंतु अवेयरनेस के द्वारा ही आपको पहचानना है. और याद रखिए कि आपकी ट्रू डिजायर आपकी एनलाइटमेंट ही होना चाहिए. जब तक कि आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक कि आप लूप में बार बार फंसते रहेंगे. आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज आकर्षित करिए. नाम, पैसा, धन, दौलत, सेक्स, ऑपोजिट सेक्स, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में आप लोग अवेयर हो जाइए. और इन सब चीजों को आप जटिल मत करिए, बहुत सरल रखिए. आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है उसको देखिए. और मैं फिर से बुद्धा का वो राइट कोड आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि राइट थिंकिंग, राइट व्यू, राइट डिजायर. जब तक कि आप इस पे को नहीं पालन करेंगे, तब तक कि आप अपनी मदद नहीं कर सकते. गलत इच्छाओं का फल आपको भोगना ही पड़ता है. जो बेबी सोल, इन्फेंट सोल्स हैं, उनकी इच्छा नाम और पैसे वगैरह की होगी ही, उनमें कोई बुराई नहीं है. पर यदि आप विकसित आत्मा हैं, तो आपके में सिर्फ एक ही इच्छा होना चाहिए, अपने आप को पहचानने की. और आप अच्छे से जानते हैं कि इस एनलाइटमेंट के पाथ पर आपको बहुत सारे प्रतिद्वंदी के रूप में बहुत सारी इच्छाएं आपको आकर्षित करेंगी. पर आपको तय करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो पूरे समय आप डिजायर के प्रति अवेयर रहिए. हो सकता है कि आपकी इच्छाएं कुछ पिछले जन्मों की हो,
जो भी पिछले जन्म की भी इच्छा हो आप उसको एक्नॉलेज करिए, पर आप सोचिए कि अभी आपके हाथ में प्रेजेंट मोमेंट है, वर्तमान क्षण आपके पास है। तो एक बार जब आप ये समझ जाएंगे कि जो भी मेरे वर्तमान में है उसके अनुसार ही मैं अपने जीवन की दिशा को बदलूं, तो आप अपनी इच्छाओं के प्रति अवेयर हो जाएंगे और सार्थक और निरर्थक इच्छाओं के बीच में भेद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन सी मेरी जरूरत है, क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी और कौन सी मुझे रुकावट डालेगी। तो आप इसको अच्छे से भेद कर पाएंगे। मैंने देखा है कि शुरू में कई लोग बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, इंटेंस मेडिटेशन के द्वारा 5-6 महीने में अच्छी तरक्की भी कर लेते हैं, प्रगति कर लेते हैं, पर धीरे धीरे उनके जीवन में मेडिटेशन के प्रति तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने आसपास के जीवन की बहुत सी इच्छाओं से घिर जाते हैं। किसी को बैंक का अकाउंट बढ़ाना रहता है, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना रहता है, किसी को नई चीजें खरीदने की इच्छा होती है, कोई टीचर बनके सेवा के रूप में भी एक स्पिरिचुअल बैच अपने आप में लगाना चाहता है। कई लोग को थर्ड आई पावर चाहिए रहता है ताकि उनको सिद्धि प्राप्त हो और वो लोगों से विशिष्ट दिखें। हो सकता है कि आप मेडिटेशन के द्वारा बहुत ही आकर्षित और काम हो जाएं, और यदि आप वल्नरेबल रहे, संवेदनशील रहे, कमजोर रहे, तो आप लोग के पास काउंसलर के लिए, काउंसलिंग करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो उनको आपकी जरूरत रहेगी और उस समय आप भी उनसे आकर्षित हो सकते हैं। तो ये पूरे समय, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पूरे समय आपको अवेयर रहना है और याद रखना है कि आपकी कोर डिजायर आपका ध्यान है, मेडिटेशन है। आपका कोर डिजायर आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है और उसी में आपको अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान को लगाना है। सब डिजायर हैं, आप पहचानिए, एक्नॉलेज करिए, पर फोकस अपने कोर डिजायर पर ही रखिए। थैंक यू। Okay. Actually, looking at the questions which you sent, I was realizing that the very reason I took up the topic was to make things simple. But I think some people have unnecessarily. Sir, I deleted so many questions. Okay, fine. So what we will do is actually we'll quickly take the questions because I don't want to complicate the things. Let it be very simple. Okay, some people asked about the unbalanced thoughts and can something be done to prevent them from manifesting in this life? Yes, something can be done. When you practice mindfulness, when you practice meditation, you can revoke your thoughts which doesn't work. Okay, so would any kind of forgiveness or prayer work? Yes, always you forgive yourself, you forgive others, and you pray to the God or universe to help you to be in the right path. Okay, and can we balance our desires astrally? You right now you are in the physical body. Focus on your physical. Don't worry about your astral things. Yes, some desires they come in your dreams. And then, for example, you want to go for a beach holiday. Okay, so you want to go for a beach holiday. That's a desire. And one night you saw in a beautiful dream, a beautiful beach and nature, and you are happily swimming in the beach. You are enjoying in the nature. You are so fulfilled. So the next day morning, you might say, oh, well, I had such a beautiful dream, so I don't need to go for a beach holiday. Yes, it is possible. Your desires might be fulfilled in your dreams also. Okay. तो पुराने जन्मों के जो थॉट्स हैं, जो हमारे इस जन्म में पूरे नहीं हो पाए, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? तो सर ने कहा कि माइंडफुलनेस के द्वारा आप उनके प्रति अवेयर होकर उनको रोक सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि क्या एस्ट्रल डिजायर को भी हम बैलेंस कर सकते हैं? तो सर ने कहा आप एस्ट्रल वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, आप संसार में रहते हैं, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में जो आपकी डिजायर हो रही है उनके प्रति आप अवेयर हो जाइए। पर हाँ, यदि आपकी कोई सपने में इच्छा पूरी हो रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपको कोई समुद्र के तट पर जाके एंजॉय करने का मन है और आपको सपने में वाकई वैसा ही आपने ड्रीम देखा कि आप बीच पे जाके एंजॉय कर रहे हैं, तो सवेरे उठ के आप कहेंगे कि अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी समुद्र तट में जाने की। तो आप, क्योंकि आपका मन संतुष्ट हो गया है, तो आप उस इच्छा से लेट गो आराम से कर सकते हैं।
So I think the best is I'll take the people's questions. Please ask some real-time questions, examples. You know, the right question is something which really helps your evolution. You know, don't ask the questions out of curiosity. You know, ask something which fundamentally helps you in your progress. Okay, so you can raise and I will answer. You can raise the hands. Okay. Jigna. Yes, sir. Good evening, sir. Actually, sir, I am stuck in between of Swadharma and Paradharma. Right now, I have a desire of knowing many things. Like I want to go into the spiritual path. So I am doing meditation for near about 3 to 4 hours a day, and I have a craving to know about the enlightenment. For that purpose, I'm traveling to the different places and attending different sessions, sir. So, is this desire is a good or a bad? Because I'm leaving my son and husband at home and listening my inner voice. I know that sir, Rome was not built in a day. I have to work hard and I have to be a patient for to know more things. Um, so my question is more that I'm doing adharma by surpassing my family responsibility, or I am doing swadharma, sir, by listening my inner voice, sir. Sorry, I missed the second part. So your question is, yes, you have the desire to travel, and that is called, you know, what is that called? That's called spiritual shopping. Yes, sir. So moreover, the Okay, so people are that's saying that why you are traveling so much, you just sit at home and do meditation and listen to this session online. But I want to know, explore more thing, and I just want to grow more on my spiritual path. So like even I want to attend your session of Bangalore. I'm not fascinated by you, sir, but I'm fascinated by your session, what you are telling in the session, sir. So I want to do that thing which I'm not able to do at home for 4 days. I can't able to be a mon at home, but I know that this can be possible to be in the Bangalore. So my desire is good or a bad. Am I doing a swadharma or am doing adharma by surpassing my family responsibilities, sir? okay. So now, after listening to the Dharma topic, you have become more worried about whether you're doing the right thing or not. Yes. Yes, sir. So yes, sir. And you said that Okay. you So have to now, listen your inner voice. Yeah. so you know the answer as well. So I'm listening my inner voice, but most of the people around my around me says that you are surpassing your responsibility. You can do this thing at home only, sir. So I am very much confused, sir. Okay. Okay. So it's very important you understand the bottom line. Okay. The bottom line fundamentally is whatever you feel as right, you have to do it. Yes. Nobody in Okay. the entire universe, nobody in the entire creation is going to tell you what is right and what is wrong. To decide what is Okay. right and what is wrong is your responsibility. On what basis you Okay. can decide what is right and what is wrong? Based Okay. on what? Based on your awareness of the truth. Okay. So focus on the truth. Always your effort should be, at any point of time, your effort should be to feel what is right for you at that moment. What is right for you today may be wrong for you tomorrow. What is wrong for you tomorrow might be right day after tomorrow. Doesn't matter. You always follow what is right for you. Because your Okay. right and wrong keeps changing according to your knowing of the truth. Okay. So right now you feel like you want to attend many retreats, you want to travel, you want to explore. Yes. That is what you feel like doing. You do it. There's nothing wrong in it, Okay. but not at the cost of. It should not be an escape. It should not be the route of escape where you have to take care of your family members. They need you the most, and you're escaping Okay. them. That is not the right thing to do. Okay. Yes, sure. So, for example, I don't know what is your exact scenario at home. For example, you are needed to stay home. It is because they need you, there is an emergency, or without you, they will suffer. Okay, your family member. Yes. Then Okay. making them suffer and leaving them is adharma for you. But Okay. you are in a situation where they are okay to handle by themselves for 3-4 days or 1 week. They are okay to handle themselves, but you have a Yes. desire to travel for 1 week, then it is perfectly okay
to travel 1 week because they are able to handle themselves. Okay, sir. Or you have a desire, why to take care of this family? You know, I don't want this family. I'm fed up with my mother. I'm fed up with my father. I'm fed up with my children. I'd rather be alone in some ashrams with other seekers, and you leave them permanently. That is adharma. So it is so dynamic. It is subjective. It depends on the situation. It depends on the individual. It depends on the family environment. It depends on which time period you are born, your sex, your age, your soul evolution, everything. It's very dynamic. So if it is so dynamic, Okay. how do I handle it? How do I make the right choices? The answer is very simple. Close your eyes and meditate for 15 minutes. Let your mind be empty. Close your eyes and meditate for 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. And after you come out of the meditation, what you feel as the first feeling, what you feel in your heart, you follow it. Okay. And take Yes, I got my responsibility for it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I Okay? got my answer. Yes, I got my answer. Thank you very much, sir. Yeah, because sometimes when you use your mind, you might make a wrong decision. Your mind might lead you into a direction which is not good for you, because your mind is Yes. nothing but your surroundings. Yes. Your mind is nothing but the bundle of thoughts from your surroundings right from your childhood. Okay, your parents, your friends, your society, your culture. There many things are part of your thoughts. So Yes. your mind might deceive you, but your heart Yes. or your inner voice never deceives you. So when you Okay. meditate for 20 minutes, 30 minutes, you empty the mind, and then whatever you feel deep in your being, you follow it. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Got my answer. Thank you, Yes. sir. तो जिज्ञान जी पूछ रही थी कि इनके स्वधर्मा और परधर्मा और इन सब के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती है, पर वो एनलाइटमेंट को बहुत चाहती हैं कि वो एनलाइटन हो, और 3-4 घंटे रोज में मेडिटेशन करती हैं। इसके लिए वो काफी दूर दूर की यात्रा करके भी दूसरे मास्टर्स लोग को सुनने जाती है, और घर में बच्चे और पति को छोड़कर जाती है। तो उसे कई लोग कहते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो और तुम सिर्फ घर में बैठ के मेडिटेशन करो, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो सर से पूछ रही है कि जो मैं ये छोड़कर जा रही हूँ, तो ये अधर्मा है कि धर्मा है, जबकि मेरी अंदर की आवाज हमेशा मुझे जाने के लिए कहती है। तो सर कहे कि ये तो स्पिरिचुअल शॉपिंग जैसा ही है। चाहे आपको जो बॉटम लाइन, मतलब जो आपके अंदर से जो आपको अच्छा लगता है वही करिए आप। पूरा ब्रह्मांड आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, और वो बताएगा भी कैसे। ये आपके अपने सत्य के प्रति जागरूक होने से ही आपको मालूम चलेगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आज अभी इस समय मेरे लिए क्या सही है। जितना आप सत्य को जानेंगी उतना ही आप इसे पहचानते जाएंगी, क्योंकि जो आपके प्रति क्षण के जो आपकी धर्मा है वो पूरे समय चेंज होते रहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बाहर जाके अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रही हूँ, और तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं। पर यदि उनको आपकी जरूरत है और आपके बगैर उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको छोड़कर ऐसे सेशंस अटेंड करने जाना अधर्मा होता है। तो अगर आपके घर वाले भी राजी हैं पूरी तरीके से, तब आप 1 हफ्ते के लिए भी जा सकती हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ भी ना हो और वो पूरी तरीके से राजी हों। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है कहीं और आश्रम में रहने के लिए, तो वो अधर्मा है। बाकी जो भी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो सभी आपके जो डिजायर है, वो जो व्यक्तिगत आपकी फैमिली कैसी है, आप किस पीरियड में पैदा हुई हैं, आप कौन से लिंग की हैं, आपके साथ कौन कौन सी जिंदगियां जुड़ी हैं, ये सब कुछ आपके डिजायर और उसको पूरा करने पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर डिजायर की जो मैं बात कहता हूँ वो डायनेमिक है, गतिशील है बहुत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेडिटेशन करने बैठ जाइए, और मेडिटेशन के बाद आपको पहली फीलिंग क्या आती है उसको फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके दिल की आवाज है। माइंड से आप मत सोचिए, क्योंकि माइंड हमारी जो कंडीशन रहती है बचपन में, हमारे समाज के द्वारा, हमारी संस्कृति, हमारी फैमिली, इन द्वारा के जो कंडीशन रहता है, इसलिए अक्सर माइंड हमको धोखा देता है।
तो आप सिर्फ अपने दिल की आवाज और हार्ट को समझिए और उसी को ही फॉलो करिए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आप इसको अपने गहराई में ही जाके महसूस कर सकते हैं। And the follow-up is, don't feel guilty. Once you make a decision, don't feel guilty about it. Don't turn backwards, go forward. Right or wrong doesn't matter, but it is your swadharma to follow your heart, to follow your feelings. Always stick on to that. You might do a mistake, so what? You learn from your mistakes. So don't feel guilty about it. Always be guided to do whatever you want to do. When I started my spiritual journey, there is nobody to tell me like this. When I started meditating, my whole family was against me. They created artificial emergency also, that you should not do this. Then my inner voice was saying, no, you cannot stop for anybody else. You have to follow what you are doing is right. So I didn't care. I became a rebel. I always followed what I felt is right in my heart. But at the same time, I took responsibility. For all the decisions I'm going to take, I will take responsibility. Whatever the consequences, I will face it. I'm not going to blame anybody, and I'm not going to regret it. Because I feel it is the right thing to do, I will do. So make sure there is no energy of guilt which will come to you once you make a decision. That is also very, very important. And I don't know whether I should tell you in the public forum or not. Unless you are rebellious, you are not a candidate for truth. तो सर ने कहा है कि आपको और एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गिल्टी मतलब अपने में आत्मग्लानि कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर एक बार आपने निर्णय ले लिया, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर लीजिए। और धर्म आपका वही है कि अपने दिल की बात सुनो, पर यदि कोई गलती भी हो गई है तो कोई बात नहीं, गलती से ही हम सब सीखते हैं। जब मैंने भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी तो मेरा पूरा परिवार खिलाफ था। मेरे परिवार के लोग आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से एक इमरजेंसी का सिचुएशन पैदा कर लेते थे, पर मैं बगावती हो गया और मैं उसी समय मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ली कि चाहे जो भी परिणाम होगा मैं ही भुगतूंगा, किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा। पर मैं कभी भी रिग्रेट मतलब पश्चाताप नहीं करता था, कि पछतावा नहीं करता था कि मैंने गलत किया, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो जो एनर्जी है गिल्ट की, वो आपके में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपने कोई भी अपनी इच्छा पूरी करी हो। और याद दिला दूं कि जब तक कि आप बगावत नहीं करेंगे, तब तक कि आप सत्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। You don't want to translate the final statement, is it? नहीं सर, कुछ हद तक के तो सर रिबेलियस होना पड़ता है ना, up to some extent, not fully, because you are male, sir. We have Male, female doesn't matter. Truth has to be spoken. You translate. ट्रुथ बोला जा सकता है, परंतु फैमिली में अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता एक फीमेल के लिए। Nobody is asking you to go against. Against is different. Going against is totally different from being a rebellious person. Rebellious is you are having so much strength and confidence within you that you know how to take the right decisions at the right time. You don't become a puppet of another person. That is rebelliousness. तो सर कह रहे हैं कि रिबेलियस का मतलब बगावती होने का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार के खिलाफ जाइए, पर आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। Okay, and the most important is you should take responsibility for the consequences. Spirituality is all about taking responsibility. When you take responsibility, then you are a spiritual person. To take responsibility is also equally important. So taking that responsibility happens only when you are a rebel. Okay, so the next question is. तो सर कह रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, उत्तरदायित्व यहाँ पे बोलेंगे, उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि जो भी परिणाम होगा वो मेरा होगा, मैं उसे पूरा करूंगा।
इस आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी लेना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रिबेल होने के लिए है कि आप जो भी परिणाम भुगतना होगा वो आप भुगतेंगे। And in this ज्ञान भारत session there was women empowerment sessions, 1 महीने के चला। अभी तो क्या हो गया women empowerment? चल Why रहा है ना backstep? सर? नो सर। Why backstep? We have to consider the family. We have to consider other things. Male का अलग होता है, female का अलग होता है। तो सर इट इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ सर। अच्छा, मुझे कोई एक जने हैंड रेज करके बताओ कि मैं गलत बोल रही हूँ क्या? अब No, no, ये आपने नहीं गलत नहीं बोल रहे। सर, Through you, I'm telling others that don't be worried. Don't be worried. Every female knows her responsibility. When a female is empowered, she knows her responsibility. Every male is empowered. So it all depends on the soul. As such, we are not motivating anybody to do anything ugly. All we are guiding them is to be strong. What you feel like doing it, do it. Take the right step. And when you take the right step, you inspire other people also to follow, to take the right step. See, in my case, my whole friends, my family, everybody was against me. They thought I'm a crazy person. But over a period of time, when I stick on to my decisions, they saw that, okay, this fellow is not doing anything wrong. He's actually looking for something. He's actually seeking something. So he's not doing anything wrong. So they understood. It took some time for them to understand. This is what I call it as rebelliousness, where you are not concerned about others' opinions. See, this is Gyaan Bharat, no? So we have to speak the truth as it is. The truth is, you don't bother about others' opinions. You don't bother about others' validations. You always follow your heart. But yes, there is a way. Tarika hai. Kaisa? Suppose you want to leave the family for a week. You just don't become a rebel and say, I don't tell you where I'm going, I'm simply going. No, that's not the way. There is a way. You hold your loved ones' hands, you hug them, and you tell them that I deeply love you and I respect you, but just give me 1 week time. I'm going for my own inner space and I will come back. I'm going to do wrong. I'm in my own journey. Please understand. So speak lovingly to your family members and follow your heart. That is the way. सर कह रहे हैं कि अपने आप को शक्तिशाली समझो और एक इंस्पिरेशन बनो, एक सही कदम लो ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर्ड हो। मेरा भी परिवार मुझे पागल कहता था, परंतु जब मैं अपने सिद्धांतों पे अडिग रहा तो उनको भी लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। इन सब में समय लगता है समझने में। हमें कभी भी किसी दूसरों के राय या दूसरों के प्रमाण की हमको जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आप अपने परिवार वालों को प्यार से समझाइए कि मैं आप लोग को प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ, पर मुझे 1 हफ्ता अपने जीवन को अंदर की यात्रा करने के लिए मुझे दीजिए। ये मेरी यात्रा है, तो अपने दिल को फॉलो करिए। No, what about final part of the translation? सर यही तो आपने बोला। You completed, is it? सर आपने विमेन एम्पावरमेंट पे बोल रहे थे। नहीं, speak lovingly to your family members. हाँ, Make them understand. मैंने बोला ना कि उनको आप प्यार से समझाइए कि मैं आपको प्यार करती हूँ और आपका ख्याल रखती हूँ, पर 1 हफ्ता मुझे परमिशन दीजिए बाहर जाने के लिए। Okay. तो सर ये ठीक है ना, परमिशन मांगना? परमिशन जरूर मांगना है, but don't suppress. See, there is a fine line. See, it is very important to understand this. That's the reason I'm stressing this subject, because you cannot take it as black and white. There is a very fine line. I am equally concerned about you, and I'm equally concerned about the people, the loved ones, the family around you. I'm equally concerned. See, in terms of emergency, it is only your family members who is going to come and help you. So your family is also equally important.
So the reason I'm stressing this is there should be a fine balance. In the beginning of the spiritual journey, right, you are meditating and your family members don't understand you, and you want to explore few places and you want to go to few ashrams and you want to meditate. Naturally, your family members might stop you out of their concern, and their concern is actually right because they're worried about you, they're concerned about you. So their concern is also right. But it is your responsibility to make sure they are not worried about you and still follow what you want to do. So it takes a great responsibility. So that's why I'm stressing it is your responsibility to make sure you make them understand to the best of your possibility. In spite of you making them understand, they tell you, no, absolutely no, I'm not going to listen to your heart. Your feelings are not important to me. And you have to listen to what I say. If somebody is saying like that, then you have to consider whether what kind of a family you have chosen and how to respond to it. Then again, that's a different option. So it's not a black and white thing. It depends from family to family, situation to situation. But in my experience, especially you are speaking about a female getting permissions from the family members. In my experience, if a woman explains to a man lovingly, and if the man knows that the female is safe, then every man wants to make sure the woman is happy. Every woman wants the husband to be sensitive and understanding, but you don't know how to explain, you don't know how to communicate. That is the problem. When you know how to communicate, then every man will be loving. Every family member will be loving. So that is also your responsibility, how you communicate. ठीक है मैम. तो सर ने कहा कि एक बहुत ही सूक्ष्म रेखा है इसके बीच में. मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे परिवार के बारे में भी उतना ही चिंतित हूँ. अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो सबसे पहले आपका परिवार ही आपको मदद करेगा, इसलिए आपको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. जब आप लोग शुरू में मेडिटेशन करते हैं तो आप लोग के घर वाले लोग पसंद नहीं करते, और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं किसी आश्रम में या कोई भी कुंभ वगैरह में, तो आपके परिवार वाले लोग चिंता करते हैं कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं, इसीलिए वो आपको कई बार मना करते हैं. तो आप उनको अपने बारे में अच्छे से समझाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप उनको बेहतर तरीके से संवाद के द्वारा उनको समझाएंगे कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं वहां पे सुरक्षित रहूंगी और मैं आप लोग का ख्याल रखती हूँ, पर मुझे ये समय चाहिए. आप जैसे अच्छे से समझाएंगे तो वो आपको बिल्कुल जाने देंगे. पर कभी भी आप ऐसा मत करिए कि नहीं मुझे जाने की इच्छा है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं तो मुझे जाना है. आप बगावत करके या अपनी इच्छा को जबरदस्ती थोप कर मत जाइए, आप उनको समझाइए अच्छे से. ये हर परिवार और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपका कैसा परिवार है और आपके घर में कैसी परिस्थितियां चल रही हैं. मेरे खुद के अनुभव में है कि जब एक औरत अपने पति को बहुत अच्छे से प्यार से समझाती है कि मैं वहां पे सुरक्षित रहूंगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो उसके हस्बैंड उसके बिल्कुल परमिशन दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड लोग भी उतने ही सेंसिटिव और बहुत प्यार करने वाले रहते हैं, पर वो अपना कम्युनिकेशन के द्वारा अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करके उनको अपने विश्वास में लें और उनसे सही तरीके से परमिशन लेकर जाए. थैंक यू. Okay, so next is Mohini. नमस्ते सर, आत्मवंदना. मैं चंद्रमोहिनी दिल्ली से बोल रही हूँ. आपका और नीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार और बहुत बहुत प्यार. सर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. जो आपने आहार से रिलेटेड बताया था, खाने से मतलब, जैसे मैंने लहसुन छोड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया, तो मैंने अभी पीछे थोड़ा नमकीन के बीच में नमकीन आता है, जैसे मिक्सचर वगैरह आते हैं, नमकीन आते हैं, उसमें मैंने लहसुन का वो ले लिया, फ्लेवर खाया मैंने. उससे मैंने देखा कि मेडिटेशन में मुझे काफ़ी चेंजेस आए. कई बार मेरा मन नहीं करता था और मतलब
दिल करता था कि मैं उसको जल्दी से छोड़ दूं मेडिटेशन करना, मतलब टाइम से बिफोर। और कई बार मुझे लगा कि मेरे विचार भी काफी ज्यादा आ रहे हैं मेरे अंदर उसमें उस समय। तो अभी आपने जब बताया कि हमें ऐसा लेना नहीं चाहिए, उसके बाद में मसाला, मुझे अब मैंने रियलाइज किया कि वो मसाला भी जैसे है नमकीन वगैरह का, हमें देख के ही करना चाहिए कि अगर उसमें मसाले में भी है तो हमें नहीं लेना चाहिए। ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, आपने जब बताया फूड के बारे में, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी उसका कि नहीं लूं। अ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, अगर पूछ सकती हूँ तो। Yes, you first of all, congratulations for your experiment on garlic. थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक ये था कि जैसे हम अभी मतलब ना कभी पास्ट लाइफ में देखते हैं कि हमारा किसी के साथ, किसी सोल के साथ रिलेशन था, और हम उसको मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा हमें याद आ जाती है उसकी, और बहुत रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रोना भी आता है, पता नहीं क्यों अंदर से एकदम मन भारी हो जाता है, और उसको मतलब हम याद करते हैं। और मैं अपने आप को समझाती भी हूँ कि हमें भगवान ने इसीलिए इस लाइफ के बारे में, इस पिछली लाइफ के बारे में हम भूल जाते हैं कि किसी के साथ हमारा किसी सोल के साथ रिलेशन था। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद में मतलब मैं कूल हो जाती हूँ, मतलब वो थोड़ा सा, पर लेकिन ऐसे कई बार बीच बीच में मुझे होता है कि उस समय पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आता है, बहुत मतलब एकदम से मतलब खराब सा लगता है। और आप बताएं कि क्या करना चाहिए, मतलब उस समय, मतलब अगर ऐसे लगे तो। Past life को बोलना जरूरी मैडम. जी। You forget about all the past lives. Focus on the present life. Focus on the present moment. See, नहीं it सब is very important. It is very important to understand जी that we take many roles. We take many lifetimes. We जी take many roles, but all is just a drama, right? Everything is a drama. Every role we play, every lifetime is a drama. And why we play this drama, why we are incarnated in the first place, is there are only two reasons. For every soul to incarnate on the planet Earth, there's only two reasons. The first reason is for your own evolution. The second reason is what you can offer to make the planet Earth more beautiful. There's only two things, and you have to do both the things. So focus on your own evolution and focus on what you can contribute to make this planet Earth more beautiful. Your focus should be only on these two things. Then there is no confusion. कई लोग past life का चक्कर में they go hayway, As a matter of fact, according to Harold Percival, he says don't go to past life regressions. वो मना करता है. सर, सोचती मैं ऐसे नहीं हूँ, एक बार हो गया जैसे, और उसके बाद में पता नहीं क्यों अपने आप ही वो आ जाता है एकदम से, तो मैं तो वही अपने आप को समझाती हूँ कि मुझे No, नहीं you वो don't know करना। whether it is real or not. No, so you don't know या whether it is real or not. It can be illusion also. हाँ, हो सकता है। Then why worry about it? छोड़ दो उसको. ठीक है, थैंक यू सर। Yes. थैंक यू। Okay. Chand Kapoor. Sir, I have a question. Yes, As you ma'am. said, if someone is doing their job or their duty faithfully and very nicely, but being human, sometimes we get angry also, and sometimes emotions, because emotion jo hai, of anger and frustration comes. Then why does it impact our karma? Because as most of the time, we are doing our duty joyfully and faithfully. If you do your duty joyfully, then you are doing your dharma. If you don't do your duty joyfully, then you get stuck up in karma. So that is the relationship between karma and dharma. Karma is
you are attached to the work. There is some expectations, right? And dharma is you become a witness and you do it as a duty without any complaints. So that's the difference. How you do it, what is the attitude of what is the attitude of the execution of the work? So that is very important. See, for example, somebody is sick at home, right? You have to take care of them. You have to feed them. They might be little, sometimes they might be nasty. They might create some troubles. You might feel naturally angry. But that time when you are feeling angry, you just say that I'm doing my duty. So let me do happily. So you remind yourself that it doesn't matter how the other person is responding to. I am doing it for my joy. So as long as your focus is, I am doing it for my joy, I am doing it. Sometimes it is not your joy, but he happens to be your son or a daughter or, your mother, somebody you have to take care. It's not your joy to go through that. But because you have taken the role, you are born in that family, you got married to that particular family, to that particular person. So you have to take care of it. That is your duty. So anyway, you are going to take care of it. So take care of it with a smile on your face. Yes, sir. Thank you very much. Thanks a lot. You got the answer, madam? Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ फिर। पिछले वाली जब मोहिनी जी ने पूछा था वो पास्ट लाइफ के बारे में, तो सर ने कहा कि आप पिछले जन्म के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट और प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचिए। हम अपने इस जन्म मरण के यात्रा में बहुत सारे भूमिकाओं को निभाते हैं, पर हर भूमिका में हम एक नाटक ही करते हैं। और हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लेते हैं, इसका दो कारण होता है, अपनी स्वयं की प्रगति के लिए, और दूसरा इस पृथ्वी को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं क्या कुछ सेवा कर सकता हूँ, ये भी हमारे कंट्रीब्यूशन, हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी इच्छा रहती है। दोनों ही आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप, परसिवल भी कहते हैं कि पास्ट लाइफ की तरफ मत देखिए आप, क्योंकि अक्सर ये भ्रम रहते हैं, इल्यूजन्स रहते हैं। तो आपको भी जो लग रहा है कि आपके कोई वो पहचान वाले पास्ट लाइफ के हैं, तो आप उनकी चिंता मत करिए और उसको लेट गो कर दीजिए। अभी चांद जी ने पूछा कि यदि कोई अपने काम को और अपने धर्म को अच्छे से निभा रहा है, पर कभी कभी वो गुस्से में भी आ जाता है या उसको फ्रस्ट्रेशन भी होता है, तो फिर वो कर्मा में क्यों आया, जबकि वो अपने बाकी काम तो अच्छे से खुशी से कर रहा है। तो सर ने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं, मतलब जो भी आपकी धर्मा है, उसको जब आप जॉयफुली करते हैं तभी वो धर्मा कहलाता है। जब आप खुशी से नहीं करते हैं तो वो कर्मा के लूप में जाता है। कर्मा के लूप में अर्थात जब आप कोई काम करते हैं तो उससे आप कुछ अटैच हो जाते हैं और कुछ आपको अपेक्षाएं रहती हैं, जबकि जब आप धर्म को निभाएंगे तब आप साक्षी भाव के रूप में रहेंगे और कोई भी आपके एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का मतलब कार्यान्वयन का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है आपका, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, आप उसकी देखभाल करते हैं, पर कभी कभी वो चिल्ला देते हैं या नाराज हो जाते हैं, तब आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अपने धर्म को निभा रहा हूं और इसे मैं खुशी खुशी निभाऊंगा। हो सकता है कि कभी किसी परिस्थिति में आपको बुरा भी लगे, यदि आप अपने बच्चे वगैरह सबकी सेवा कर रहे हैं और काफी टाइम हो गया और आप कभी कभी इरिटेट भी हो जाए, तो आप याद रखिए कि आपने इस भूमिका को खुद चुना है, आपने ही इस परिवार को चुना है और अपने काम को, अपने धर्म को चुना है। तो इसके बारे में ख्याल रखिए और जो भी धर्म चाहे कितना भी कठिन हो, आप अपने चेहरे पे मुस्कान करते हुए एक अच्छे सकारात्मक रवैये के साथ ही करें। थैंक यू सर। Okay, next, Deepti. Hello everyone, I am Deepti from Bhopal. Sir, I had 2-3 questions, but right now I wanted to take one of my example related to which we were discussing right now, that a woman, मैं हिंदी में बात करती हूँ, सबको समझ में आएगा कि एक straight to the point, short and sweet. सर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक मेरे फादर इन लॉ इज अ कोर नॉन वेजिटेरियन, तो आई कैन लीव नॉन वेज, आई कैन लीव
eggs and everything, but I can't leave cooking for him. This will disturb the peace of the whole family if I'll say no, that I will not cook for him. So in that case, मैंने इसको आंसर दिया मैडम पहले. See, you say he is your father-in-law. Have you ever went to him and holded his hands and looked deep into his eyes lovingly and sir, said, we don't talk each other much. then that is something you need to work on. You see, unless you go and communicate lovingly, how do you expect the other person to understand you? If I were you, I will go and hold his hands and look into his eyes and say, Papa, I love you very much, but please understand, it gives me pain. When I'm cooking, it gives me pain and I'm not happy to cook. When you speak these words, he will understand you. He will say, Beta, aapko dard ho raha hai to mat karna. We assume a lot of things, but it all depends on how we communicate, how open we are, how loving we are. Okay. This is what I spoke before. Okay, sir. Thank you. Sir, one more question I have. But here, don't conclude. Don't conclude. There is something for you to learn. There is something on your part. You should do the right thing. When you do right, everything will, whatever happens to you will be right. Right thinking, right intent, right speech, right actions, right concentration, everything should be right. When you do the right things will happen to you. I am just waiting miraculously if he changes thought, because Don't expect him to change. You change. Okay. Chalo. Sir, I have another question. Yes. You said a meditator should keep his house and things as organized as possible and should keep the house clean and everything. But sometimes I feel I'm not able to organize all my things properly. And whenever I get time, I feel I have half an hour, so I should do meditation instead of doing that organizing thing. And that goes on pending and pending. So which one I should take in priority, meditation or like organizing things and all that? Do your best. Do your best and leave the rest. Okay. You can do only your best. You cannot do more than that. So first you meditate, then you will have energy to clean the room. Do your best. Okay, sir. Thank you. Thank you. Next, Vishwanath Joshi. My question is, sir, will you please explain the quotation Dharmo Rakshati Rakshata with some example? I am from Udaipur, Rajasthan. Udaipur, Rajasthan. Yes. So you want what you want, sir? Hello. Example? I am from Udaipur, Rajasthan, Dr. Vishwanath Joshi. Okay. So what you want? Yes, sir. Dharmo Yes, sir. Rakshati Rakshata, you want an example? Rakshata. Ji. That is something for you to experiment, sir. See, it is a statement. It is a statement of truth. Dharmo Rakshati Rakshitaha. That means when you take care of your dharma, that very dharma which is taken care by you will take care of you in return. Rakshitaha means protection. What protects you? Your dharma protects you. So that is a statement of truth. So you have to experiment. You are asking an example. Okay, I'll give my own example. I was working as a software engineer, right? And then I was earning a very good salary in Australia. But then my inner voice was saying, to work as a software engineer is not my duty, but to travel around the world and to teach meditation is my duty. So that is what my inner voice is telling me. I know that is my duty.
I can do software job, but my dharma is to teach meditation. So, but if I quit my job, then who will feed me? Who will buy me air tickets? Who will pay my rent? Who will put petrol to my car? And what happens to me? So it's like a survival thing. So then I told myself, okay, fine. If I'm working for a company, it is the responsibility of the manager to make sure I'm taken care through the salary. But now I'm going to work for God, like teaching meditation, leaving everything and going and teaching meditation. Just my boss is changing. Before it was a human, now the boss is the God. So I will do my duty. So let's see who will protect me, how the God is going to take care of me. So I quit everything. And as an experiment, I started teaching meditation without any expectations. So the more I started teaching meditation, the more people started offering me food. I go and teach meditation. People say, yes, we benefit a lot. Please have some food. And some people buy my clothes. And some people say, you have come all the way to come and teach meditation. So please let us buy your tickets. And some people say, because of you, we have benefited. We want more people on the planet Earth to benefit. Please take our donation and use it to spread the cause. So it's been more than 8 years. And I'm taken care. I'm very well taken care because I am doing my dharma and my dharma is protecting me. In fact, when I was working, I used to travel only 1 or 2 countries per month. But when I started doing my dharma, I started traveling more countries. And when I was working, I hardly used to eat 1 meal or 2 meals. But when I started doing my dharma, wherever I go, people cook very delicious food and serve me. So much love and affection I receive all over the world. And I started celebrating my life. So when you do your duty, that duty will protect you. That duty will take care of you. I am a classic example of that. Without going to any job, how can I travel around the world? So right now I'm living in Singapore. Singapore is, one of the most expensive countries on the planet Earth. I'm living in Singapore. So who is supporting me? Who is funding me? It is my dharma. So that is an example. When you do your duty, that duty will protect you. It is not only for me. It is for everybody on the planet Earth. It is sometimes, it is all the times. This is called Parama Satya. There is Satya and there is Parama Satya, the truth of the highest order. So Dharmo Rakshati Rakshitaha is the truth of the highest order. And I want you to experiment on it. And you give me the example the next time of your experiment. Yeah. Okay, sir. Good. Thank you. Thank you. Yes. Okay, so next is Rajendra. Sir. Namaste, sir. It is always good to talk to you, sir. Because I have attended your 2 to 3 retreats previously. Yes, sir. आपको देखते ही मुझे लगता है कि जैसे आप हमारे वाले हो. I feel very much, affection with you. Thank you. So my question was, yesterday you told me, told us that you meditated for 2.5 years in Australia, leaving everything. So you already answered this question previously, just now. But even then, I feel that how could you manage your all dharmas without money and in the city of Australia? When you want me to go into the fine details, is it? Maybe, but see, I am also meditating for the last 33 years. And I too teach meditation for the last 21 years, sir. It's a different matter. But that is my second question. But this I just, out of curiosity, I wanted to know
how do you manage when you are in short of funds or crises or something like that? Because I believe what I need will be given to me. I don't go behind my wants. I don't go behind my desires. See, whatever is needed to me, it will be given to me. Okay, let me explain to you. There are three categories of people. On the whole of the planet Earth, there are three categories of people. So the first category of the people, they will ask, I want this, I want that. They go to mandir or Bhagwan or pray, or all the manifestations. I want this, I want that. They ask, I want this, I want that. That is the first category of the people. The second category of the people are little more evolved. The second category of the people, they won't ask. They will say, God created me. God knows what I want, what I don't want. So whatever comes in my way, I will accept. God knows. Why should I bother? So they will not ask anything. Whatever God gives me, I will accept it. That is the second category of the people. Then there is a little more evolved people. That is the third category of the people. They are very highly evolved people. They will say, they will not ask anything for themselves. They will not have the expectation that God will give for them. They will be in a witness consciousness. They will say, whatever is needed through me to the welfare of the planet Earth, for Loka Kalyana, whatever is needed through me, I'm happy to receive. So that means they are not concerned about themselves anymore. They're always concerned of what service they can do to others. So that is the third category of the people. And for the third category of the people, they don't worry about their survival because they know that they're already taken care. And their focus is on serving others. So this third category of the people are the people who live in abundance. So abundance is not how much money you have in the account. Abundance is what is the mindset you have. I feel abundant all the time. I don't have $1 million in my account, but I feel I'm a millionaire. I live the life of a millionaire. So this is abundance. This is the third category of the people. So every meditator who reaches a certain stage of evolution, he understands that his dharma is to serve. And everybody who is in the path of service, they know that they are taken care. So they don't worry about it. Their focus is always on service. So I have no time to think about myself and worry about myself, sir. As simple as that. But sir, ये 10 types of dharma आप हमको सिखा रहे हैं पिछले 3 दिन से. So वो उसका पालन करते हुए ये without any money, how one can manage in this country like Australia in sadhana period? You were not teaching meditation on those days. Well, see, who said I don't take money? I do take money. When it comes in my way, I take it. I don't ask for it. But when it comes in my way, I take it. Sir, I'm not talking about now. It was your sadhana time in Australia, 2.5 years. Oh, at that time. Okay. At that time, I had a lot of credit cards. So I used my credit card. Oh. But then you see, these dharmas, can you implement those dharmas also? Take care of all our dharmas. At that time, my priority was to know myself. My Swadharma was my priority. Paradharma, I'm least bothered. Depends, you do your best. See, only an enlightened person can follow all the dharmas. But it is a guidelines that the more you follow the dharmas, the more you become enlightened. That's why I say, do your best and leave the rest. Okay, sir. Now I'm coming to enlightenment. You see, these dharmas, whatever I have given, only an enlightened person can follow all those things. But that is a guidelines that when you practice more and more you become enlightened. Okay. So second question, my. इतना लंबी क्वेश्चंस पूछ बाकी लोग वेट कर रहे हैं. सर ये 1 मिनट का है ये.
See, I have been teaching meditation for the last 21 years. Still, I feel whether I am enlightened or not. So, as you have said, in your previous sessions, कि जो meditation सिखाता है, he must be bodhisattva, and he is already enlightened in the previous lives. But in my case, sir, after meditating for 33 years and teaching meditation for the last 21 years, still I feel that if I'm enlightened or not. So that question is a very good question, sir. Every day you should ask yourself that I'm enlightened or not. So that will keep you grounded. Unfortunately, there are many people who think they are enlightened. That is the trouble. Okay, so every day you ask a question, am I enlightened or not? So I better be focused on my enlightenment journey. So then you will focus on your dharmas. But if you assume that you are enlightened, then there is some trouble. Yeah, I have never felt like that, sir. So you are in the right path. Don't worry about it, sir. Whether you are a bodhisattva, whether you are arihant, whether you are enlightened or not, don't be bothered about it. Whatever makes you happy, you do it. That's it. Okay. Again, this is an ego, to have the acknowledgement or realization. Am I enlightened or not? I'm teaching for 21 years meditation. I'm meditating for 30 years. This is all nothing but identities. This is what you feel about yourself. So these are all the ego factors. So just ignore all the things, how many years you are meditating, what you are doing. Just ignore yourself. Only keep one thing as a benchmark. If you are happy 24/7, you are enlightened. That's it. I am happy, sir, all the times. But Then at the same time, how does it really matter? If you are happy 24/7, how does it really matter whether you are enlightened or not? How does it matter to you? What is the test point mainly? To know how to know whether a particular person is enlightened or not? Why you need to know? You're already happy. Why you need to know? What is the reason? Yes, I am happy. There is no problem. Then if you're already happy, then the question doesn't come in the first place. Because the question has already come, so there is something you need to work on. So on that aspect, become aware of it. That's it. Okay, sir. Okay, sir. Still not much satisfied. When the questions are coming from the ego perspective, it can never be satisfied. Okay. Thank you. All right. Okay, so Mitu. नमस्कार। आपको देखने से बहुत ऐसे लगता है जैसे हमारे ही सर हैं, हमारा ही ग्रुप है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, ज्ञान भारत से। जब मैं नहीं आती हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, और ये क्लास करने के बाद, आपकी क्लास करने के बाद इतना परिवर्तन आया, इतना चेंजेस आया, ऐसे लगता है कि मेरे सामने में ऐसे बुलेट प्रूफ लग गया है, और कोई भी कुछ बात बोलता है तो अंदर तक नहीं लगती है और ऐसे फील नहीं होता। पहले बहुत गहराई तक सोचने लग जाती थी और बहुत दुख लगने लग जाता था, सोचती थी इसने क्यों बोला, मैं ये क्यों बोली, ऐसा बहुत कुछ आता था। और जब से मैंने आपकी क्लास की, आप से मैंने स्वाध्याय लिया, उसके बाद में इतना परिवर्तन आया, मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि यार इतना कैसे परिवर्तन आ गया। अभी कहीं पे मैं शादी पे गई थी तो प्रोसेशन चल रहा था, तो किसी ने मेरे को ऐसे बोला, मैं पूरे रोड में गिर गई, लेकिन मेरे मन में थोड़ा भी नहीं आया कि मैं ऐसा प्रेस की तो मैं नीचे गिर गई, मुझे ऐसा, और मेरे मन में कुछ भी नहीं आया, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला उनको और मैं आगे बढ़ गई। जो मुझे आके ऐसे पकड़े थे, जिसके थ्रू मैं गिरी, उनको बहुत ग्लानि हुई कि मेरे से गिर गया और इन्होंने कुछ बोला भी नहीं मुझे। मतलब मुझे इतना ज्यादा मेरे में चेंजेस लगता है, और कुछ बोलने से भी पता चलता है कि मैं क्या सही बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ किसी को भी,
तो जब मैं बात बोल देती उसके बाद में सामने वाला चाहे से रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये मैंने करेक्ट सेंटेंस बोला था और ये करेक्ट नहीं बोला था। तो मुझे बहुत फील होता है कि अच्छा इस समय में मुझे ये बात नहीं बोलनी थी, ये शब्द नहीं बोलना था, ये उनको हर्ट कर सकता है, शायद वो हर्ट किए होंगे, ऐसा मुझे फील होता है और चीज़ों का मुझे पता चलता है। फिर मैं खुद से ही सॉरी मांगती हूँ उनसे। तो ये चीज़ मेरे में से क्यों होता है, मैं इसके लिए क्या करूँ? क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ किसी को भी और सडन वो बोल देती हूँ मैं किसी को भी, और वो मुझे खुद को ही पता चल जाता है अच्छा ये सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। ये सेंटेंस को मुझे, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे नेबर हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, किसी को भी, और सामने वाला कुछ रिएक्शन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरे खुद ब खुद माइंड में ऐसे आता है कि तो जी समझ गए सर, क्वेश्चन समझ गए। यस सर। It's okay only, no? It's good to reflect. There's always scope for improvement. You know, sometimes you say, sometimes you realize you made a mistake, maybe you shouldn't have spoken. Then you become aware of it more the next time. That is how you learn, that is how you progress. So don't be too judgmental about your own self. Do your best at any given point of time. Do your best. And don't judge yourself. Keep on doing your best. That's it. Okay. Thank you. Yes. All right. So you want to translate, madam, or final आखिरी में कर दूंगी सर। Okay. Bhavna Rathod. Namaskar, sir. Bhavna Rathod from Raipur. My voice is clear? Yes. Sir, my question is not related with this retreat. Should I ask? You ask a question which is helpful for you. Yeah. I want just a clarity. I was traveling to Kedarnath and the Uttarakhand Gangotri. When I was travel on the trek, the nature, mountains, rivers, all those things, I feel that there is no I. I feel oneness and so happy with that time. But a single thought in my mind, the body is the obstacle, because the body, I can't blow with the river or stay with that on mountains or trees. I want to be with all the time, but I'm happy at that time. Just a single thought. So what is that, sir? What kind of question is this? It means that every time I want to be there, but we have to come. So what do you want me to do? What do you want me to answer? That is your thought. What do you want me to answer? Miss Samjrana, you please reframe the question and get back. Is it you're getting those kind of thoughts? Is it the right thoughts or not? What do you expect me to answer? भावना, हम सभी लोग हैं ओमनी प्रेजेंस, है ना, पर वहां तक के पहुंचने के लिए तो बहुत लंबी यात्रा है, तभी तो हम कह पाएंगे हम ब्रह्मास्मि। अभी तो हम ब्रह्मास्मि तक के पहुंचने के लिए आपको शरीर की जरूरत है। शरीर नहीं होगा तो आप कैसे रियलाइज करेंगे वहां तक की यात्रा? तो वेट। Thank you. Isn't it, sir? I didn't understand her question. She feels one with everything. So what is the question? So, sir, this is the omnipresence, no, sir? So we will reach to this point when we are... No, don't misunderstand. Just because you feel one with the plants and the trees and the animals, don't misunderstand that you have reached God realization state. That is just a moment where... No, sir. मैंने कहा कि गॉड रियलाइजेशन तक के पहुंचने के लिए ये बॉडी की जरूरत है ना सर, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। So her question is the body is necessary or not, is it? हाँ, और बॉडी इज द ऑब्स्टिकल शी आस्क्ड ना, तो मैंने कहा अभी तो बॉडी की जरूरत है, आपकी ऑब्स्टिकल नहीं है, एक टूल है आपके लिए वहां तक जाने के लिए। Why you hate your body so much? No, I don't hate, sir, but जैसे नदी बहुत नीचे बह रही थी तो I want to be with that, but is not safety reason ना, we are not with
on that river. All right, I'm not getting that any answers for that because I didn't understand basically. Okay, thank you. Next, Shushila. थैंक यू सर। मैं अभी फिजी में आ गई। फिजी में, ओके, ग्रेट। और स्पेशली थैंक्स इसलिए करती हूँ कि मैंने फर्स्ट आपकी रिट्रीट शुरू करी थी, तब से मेरी जर्नी, मेरी लाइफ इतनी हैप्पी हो गई हूँ कि बस अब तो खाली हैप्पीनेस ही है। एवरी सिचुएशन में हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि जो पहले बाहर की जर्नी थी, चैंटिंग ये वो सब, तो ये आपके रिट्रीट से जो निकल गया और जो मेडिटेशन भीतर आ गया, तब से अब कुछ वरी ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, मुझे क्या करना है वो करती हूँ, एकदम खुश रहती हूँ और इतना हैप्पी रहती हूँ कि मुझे कितना भी काम हो, कुछ भी हो। और अभी जब मैं 3 साल बाद फिजी में लौट गई तो सब मुझे ऐसे बोलने लगे कि आप तो और यंग हो के आ गई। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल और इतना अच्छा लगता है। और बिकॉज ऑफ योर थॉट्स आपने दिशा दिखाई और मैंने वो दिशा पकड़ी और उस पे चल पड़ी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए गाना 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, बोलूं सर? हाँ मैडम, if I say no that becomes my bad karma, right? So please. नहीं, क्योंकि जिंदगी आपने बदली है मेरी, मैं ऐसा जानती हूँ। No, actually I want to correct you. See, you got inspired by me, I understood that part, but the reason for your transformation is you, so you should give credit for yourself. You should credit for yourself. Appo Deepo Baba, only you can help yourself. You are thinking that my presence helped you, my teaching helped you. This is wrong. You got motivated, but you helped yourself. या वो बात तो एकदम सच है, लेकिन ये भी मैं अभी जो मैं 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहती हूँ। क्यों वो 2 लाइन आपका बारे में क्यों आप नहीं गा सकते हैं? Why me? Why not you? Why don't you sing these 2 lines for your own self? I will be very happy. या मेरे लिए मैं गा दूं, आपको सुना दूं। हाँ ठीक है, I am happy to listen. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची पार करा देना। बस ये 2 लाइन, जब से आपकी ये रिट्रीट शुरू होने वाली थी, तब से ये 2 लाइन मेरे दिमाग में से निकलती नहीं। मैंने बोला कि लास्ट रोज तो मैं आपको गा के सुनाई दूंगी, तो निकल जाएगी। ये मेरे लिए है कि Okay, beautiful. See, the most beautiful fact is when you are sharing your experiences, it is actually benefiting everybody. You know, it's benefiting all of us because you have such. So that is the reason this is a debate, a spiritual debate, Sajjana Sangatya. और सर मैं इजिप्ट भी गई। Okay, wonderful. Thank you, madam. Keep inspiring everybody. So now you are in Fiji. Now you have your dharma to the country where you are there, wherever. I think Fiji is the country you are spent most of your life. Yeah, 50 years. Yes, you have some dharma in that country. So teach meditation, make everybody happy like you. I mean, inspire everybody happy like you. You cannot make anybody happy, but inspire others to teach meditation. Teach meditation and inspire others. Yeah, वो मैं करती हूँ सर। Best wishes, madam. Thank you. Yes. Okay, so Dr. Sheetal का हमेशा एक चमत्कार का क्वेश्चन आता है। ठीक है। Yes. Sheetal, at least once, for God's sake, at least once, ask a meaningful question.
Sir, I have two questions. I don't know which one is meaningful. Sir, in a PLR session, sir, when we relieve the emotions or a particular situation, can we come out of that situation? Okay, first of all, PLR sessions, I'm not in favor of it. Okay. So for me, if you ask a question, sir, I'm going through some meditation. In the meditation process, I'm releasing certain emotions. Yes, I will say it is the right thing to do. But in the PLR session, you are releasing certain emotions. That is only temporary. And you say PLR session, who is doing the session? What techniques they are using? Are you getting hypnotized? Are you in an illusion? You cannot allow yourself to be hypnotized by another person. That is completely wrong. That affects your future incarnations also. So my suggestion is never go for any hypnotic sessions, any PLRs. Don't go to any PLRs, any hypnosis and all those things. Just focus on meditation. Yes. Sir, and you said go beyond right and wrong, go in witness consciousness mode. And again, you said you have to face the consequence of your action. So this both are contradictory. Now we should be aware. So, like for everything you said, This you is have not to face contradictory. This is paradox. This is the aspect of truth. Paradox. Paradox is an aspect of truth. Everything is paradoxical. Truth is paradoxical. We live on the planet Earth, but on the planet Earth there is day and there is night. So right now in India, this is evening, but in America, there is morning. So you have darkness, you have light, both at the same time. You see, you have a planet Earth. Planet Earth is there. On one portion of the Earth, it is dark. On the other portion of the Earth, there is light. Can you see dark and light are both on the planet Earth simultaneously? Can you see it or not? So right now, in Singapore, it is night. But in Europe, it is day. Europe, it is afternoon. They are seeing sun. I'm seeing moon. So the darkness and the light, they both exist. So when I say go beyond, what I mean is don't see from one perspective. If you see from one perspective, you see darkness. You see from another perspective, you see light, day and night. But when you see from the top perspective, where you can see both day and light simultaneously, then you understand the truth. So if you focused on good karmas, you have to take, for whatever the good you are doing, you have to still take lifetimes. The more you do good karmas, the more you have to take lifetimes to enjoy the good karmas. The more you do bad karmas, the more you have to take lifetimes to pay back your bad karmas. So both good karmas and bad karmas are like a chain for you. So go beyond the good karmas and bad karmas. Going beyond good karma and bad karma is dharma. Be a witness. Whatever you do, without any expectations, be a witness. Accept without any judgments, without any expectations. Get into the witness mode. When you get into the witness mode, then you come out of both good and bad. You are liberating yourself. So that's what I mean, get into the witness consciousness. You understood? Yes. So, and do you really understood? So differently, I'm understanding both the points. When I combine, I am not able to understand. Like you said, being witness. Do more meditation. When you do more meditation, you will understand. You cannot use your mind to understand the truth. You have to empty the mind to understand the truth. Yes. So, for my first question, I want to ask, so you were a PLR teacher, sir, so I'm asking you this. So when in a PLR... Who said I'm a PLR teacher?
You said that in one of the sessions. In one of the sessions. I learned past life regression therapy, but later on I didn't practice it because my consciousness didn't allow me to practice it. So I dropped it. I dropped it because I didn't feel like doing it. Because I thought PLR, compared to PLR, I can teach meditation only. So, but now I'm reading in the book Thinking and Destiny, even Percival says, don't go through any hypnotic regressions. It will affect your future lifetimes. You should never become, you should never be hypnotized by another person. So then you give away your power to another person. Then you become like a doll in another person's hand. So your strings are in their control. So never get hypnotized, according to Percival. So when I read the book, I said, okay, it makes sense. So that's why I'm suggesting. So one thing, sir, even in meditation, if we relive that whole situation, will that challenge will come out of us? In the same way, they said, in PLR, you will relive that particular situation as a whole, and you will come out of it. See, the point is, your thinking has to change. The lessons has to be learned. You reliving that experience is not going to do any good to you. But what did you learn out of it? How empowered you became? How much awareness you got? What kind of thinking got changed inside you? That matters. Reliving the experience doesn't matter. But what you learned out of it, how your thoughts got changed, how your consciousness evolved, that matters. Got it? So focus on meditation. Yes. Thank you. Indu Goyal. Madam, your voice is not audible. Hello, sir. I'm audible now. Yes, madam, with a lot of disturbance. Go ahead. Sir, I am audible now. Yes, madam. Hello. हाँ बोलिए ना मैडम, बोलिए इंदु जी. मैम एक्चुअली ना आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम इंदु गोयल फ्रॉम दिल्ली. और सर, आई वांट योर रिट्रीट in Delhi also. Really a humble request for your retreat in Delhi also. Okay, नीता जी का पूछना. और सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब आपको सुनती हूँ तो सच में आई एम ब्रह्मास्मि. मैं इस बात को बार बार फील करती हूँ, आई एम ब्रह्मास्मि. और कई बार ये पीछे भी मैं चली जाती हूँ इस चीज के, और कई बार बहुत चलता रहता है ये सब, और लेकिन ये पीछे क्यों कभी कभी चली जाती हूँ मैं. It happens, madam. There is a lot of ups and downs. It happens. We should make our best efforts, do our best. Again and again, we have to remind yourself of the truth. We think we know the truth, but we have to remind ourselves of the truth. We have to execute. We have to put our truth in practice. Yes, sir. So it is natural. We all think we know the truth, but we don't know. Until कितनी बार तो मुझे ये लगता है I am the happiest being on this earth, but sometimes I come back a little, not so much, but a little come back. No problem. As long as you pull yourself up and keep moving forward, that's perfectly fine. Oh. Okay. All right. So, Amrit. हेलो. Yes, madam. हेलो, नमस्कार सर. मैं यूएसए से, वाशिंगटन स्टेट से अमृत बोल रही हूँ. आपको गाइडेंस में और आपको सुनने में मेरे को अच्छा लगता है.
काफी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है लाइफ में, अवेयरनेस आ रही है, मगर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मगर मेरे को माइंडफुलनेस में अभी थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। मेरे को पूरा नहीं हो रहा माइंडफुलनेस। एक काम करते करते दूसरा करने लगती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ उसमें कि इसको फिनिश कर दूं, मगर स्पेशली You have to do one thing at a time, and when you're getting diverted, distracted, bring your attention back to your breath. Breath. You have to bring your attention back to the breath. And the moment you bring your attention back to the breath, you become mindful naturally. और मोस्टली खाने में भी मेरा खराब हो जाता है कि खाना बीच में छोड़ के भी कोई काम करने चली जाती हूँ। Takes practice, madam. Need more practice. Yes, but the only thing is you have to, your focus should be only on one activity. Mindfulness really comes with practice. Okay, so practice. और मेरे को एक्सपेक्टेशन छोड़ देती हूँ, मगर फिर कभी कभी हो जाती है एक्सपेक्टेशन, स्पेशली माय हस्बैंड से। Naturally. उसको कैसे मैनेज करूं? Again and again remind yourself not to have expectation. हाँ, जब एक्सपेक्ट नहीं करूं तो फिर कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। It is like this, in a relationship you will have some expectations with your partner, and when you have expectations, then naturally you will feel frustrated in the relationship. Yes, you will feel frustrated with the partner. Yeah, frustration aata hai. Then you will start shouting at your husband, poor husband, and you will start shouting at him, and then he will blame you, you will blame him. But when you pull back all your energies, and when you just sit in meditation, or when you practice mauna, or when you practice mindfulness, this will remind you, oh, actually it is my expectation, he didn't do anything, it is my expectation, and I got frustrated and I was shouting at him. So if I drop my expectation, then there is no problem. हाँ, जब नहीं है कोई एक्सपेक्टेशन फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कभी कभी वो जब बोलते टेंशन मत लो, तो मैं ले भी नहीं रही हूँ टेंशन, और वो बोल देते तो फिर मेरे को इरिटेशन होती है कि मैं तो टेंशन नहीं, मैं तो वैसे वो ज्यादा मौन रहते हैं, मेरे को बात करना अच्छा लगता है। यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बात करना चाहती हूँ वो। Okay, you are not, how old are you, madam? How many years you are married? Almost 40. 40 years you have been married? Yes. Okay, so 40 years you are married and you are having expectations. Just imagine the people who are getting newly married, or imagine the people who are just married for 2-3 years or 5 years. So this is the problem with the humanity. There is nothing wrong with your partner. I repeat again, there is nothing wrong with your partner. Your partner is a lovable partner. The problem is your expectations. हाँ जी, मेरे वो तो मौन ही रहते हैं ज्यादा। मैं तो अपनी प्रॉब्लम ही बता रही हूँ, उनका नहीं है, मेरा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, you know, whenever there is a trouble, it is because of your expectations. So you drop it, consciously you drop it. It comes again with practice. ठीक है। Again it comes with practice. Become more aware of it. The more and more you become aware, the more you do meditation, the more you do mindfulness, the more you spend time in nature, the more you spend time in nature, the more you read books, the more your awareness level increases. And when your awareness level increases, you will be mindful of things. So at the moment the problem starts, you will immediately understand, oh, it is because of my expectation. So you drop it and make peace. इतना है। हाँ, वो तो करती हूँ, कभी कभी छूट जाता है बीच में, वो तो करती हूँ। अभी तो पहले से तो बहुत बेहतर हो गया। That is the lesson, madam. That is a lesson we all have to learn. Okay. Thank you. Nice talk to you. मेरे को ज्यादा तो आपसे बात ही करनी थी, क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने क्वेश्चन। Thank you so much. Thank you very much. Okay, so friends, I think fundamentally what I want to conclude is
this 11 days session, fundamentally my idea of this 11 days is to give you some tools and give you some awareness so that your life is more happier. Okay. And spirituality doesn't mean that you are a special person. You are meditating doesn't mean you are a special person. You have to be simple, normal, humble, and don't think too much. Just keep yourself simple and happy. That is the goal of life. The only thing you need to do is meditation. Keep doing meditation every day. If you do that, you will have a lot of energy to read books. You will have a lot of energy to practice mindfulness. You will have a lot of energy to enjoy everything around you. So just keep doing meditation. Along with that energy, what you get from meditation, utilize that energy in reading books, practicing mindfulness, enjoying nature, enjoy with your family members. The more the challenges you have within your family, the more the opportunity for you to grow spiritually. So take every challenge in your life as an opportunity for growth. Stop complaining. Never complain. Accept it. That is very important. Whatever the challenges, accept it. I might sound like I'm very happy, bubbly. I have nothing to worry in my life. I might sound that way, or I might appear that way. But please do understand, I have my own challenges also. So everybody has their own challenges. Okay. Even Lord Shiva, have you seen? He's always meditating. We think Lord Shiva is enlightened, he's a great God, but he is also meditating. Don't know what challenges he has. Okay. So life is meant to celebrate. Life is meant to enjoy. No complaints, just accept the things as they are. Empower yourself. The only goal is how to keep yourself happy and how to contribute. Whatever the best you do, you have to contribute to the welfare of the planet Earth or the people around you, the society, the country, the whole of the planet Earth. There are only two things. Again, I am reminding you, there are only two things. The very essence we have come to planet Earth, we have incarnated, is only for two reasons. Number one is for yourself, for your own evolution and for your own enlightenment. What is the benchmark? How do you know that you are evolved? How do you know that you are enlightened? You are happy all the time. So that means you are evolved. In a given 24 hours, you are happy 12 hours, but you are not happy 12 hours. That means there is opportunity for you to grow, right? So you are happy 20 hours, the other 4 hours you are not happy. There is an opportunity for you to grow. Or you are overall happy, but sometimes you become sad. Then there is opportunity for you to grow. So the agenda is to be happy 24/7, right? That's point number one. And point number two, because you have come to the earth, and because of this incarnation, this body belongs to the earth. So the earth has given you so much for your learning. So you give back something in the form of service. Do your dharma. Satyam, dharmam. Satyam is for yourself, for your realization of the truth. And dharmam is what you can do. Okay, only two things, Satyam, Dharmam. When you are able to do Satyam and Dharmam, then life is Sundaram, celebration. Okay, friends. Thank you very much. Namaste to all of you. सर क्या हो गया? क्वेश्चन जो है सर, क्वेश्चन है और बाकी नहीं, आपको जो इतने सारे भेजे थे सर, तो कैसे करेंगे सर? वो बकवास क्वेश्चंस में छोड़ दो उसको। तो सर अब कल से नहीं आएंगे, कल से हम लोग को क्यों, हम प्लैनेट अर्थ छोड़ रहे हैं क्या? तो चलिए सर, कोई बात नहीं, 11 डेज भी आपने September. Okay, I'll just go through the quick because most of the questions are not useful questions. But tell me, how is this question and answer? How is this debate? आपको कैसे लगा? नहीं, अच्छा था सर, बाकी छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन सर आई थॉट सो वियर्ड, पर मैंने आपको भेज दिए थे। Oh, actually, I have to thank you also because you have so much patience to translate and कभी-कभी मैं कभी-कभी गाली भी देता हूँ आपको।
So leg pulling करते sir. So patient, and thank you for all the support you have given through Gyaan Bharat. You have helped me to reach out to more people through this Gyaan Bharat sessions, and it is my joy and it is my dharma. And sir, it is my dharma also, no sir? It is my dharma. To sir, let me go through if there is any questions. Mike, somebody was asking. Okay, it's all related to dharma and karma, which I think we have taken mostly. But you ask me general. Is it something you have? Like, is there any questions you want to ask for the sake of people? Any question you want to ask? No, sir. मुझे याद नहीं है ऐसा कोई particular question. Or Meenakshi Kapoor, she raised the hands, and I don't know if she wants to speak. Meenakshi? Yeah, just give me one second. Am I audible? Yes. I'll just put the video on. See, once again, the topic of dharma is very, very important topic, and we have to remind ourselves again and again. So when you are able to remind yourself and when you're able to execute that in your life, then naturally you will, one gentleman asked, how dharma rakshati rakshitaha. You will really, I want every one of you to do this experiment. When you practice all those dharmas, when you implement these dharmas, I want you to experiment and see how your life is prospering. I use the word saubhagya. Welfare, comfort, happiness, joy, it's all put together is saubhagya. So I want every one of you to do this experiment. Yes, please. That is very important. सर मैं पूरे ज्ञान भारत की तरफ से ही आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और 11 डेज में जो हमने डिजायर और धर्मा का सीखा सर, रियली अमेजिंग. मैं खुद मेडिटेशन सिखाती हूँ पर इतना क्लियरिटी नहीं थी मुझे धर्मा के बारे में, तो सर अब मैं ज्यादा अवेयर हो गई हूँ. The only thing is you have to be aware. See, overall, if you can see what we have discussed is the first day we started with desires. Yes. Okay. Be aware of your desires. And fundamentally, there are 5 desires which will come in your way, starting from food and all the way to the sexual attraction, name and fame, power, and possessions, money. So just be aware of it, that 5 desires. And from the second day onwards, we started doing on the duties. Why it is important to do the duty without any expectations, no complaints. Okay. So whatever the work we do, we should do it happily. And when you are able to understand what is my dharma, what is my duty, what is my duty towards myself, what is my duty towards my body, what is my duty towards my family, what is my duty towards my community, to my village, to my town, to my country, what is my duty? What is my duty? Because I have incarnated on the planet Earth, what can I do and what should I do towards myself? So that is like a fundamental guidelines which this dharma topic is not from me. It is from the Hindu scriptures. It is from Mahabharata. It is from all the enlightened masters, right from Jesus Christ to Lao Tzu to Harold Percival. I have just integrated everything, so that the more you practice it, the more you are helping yourself, the more you make your life a little more beautiful, a little more happier, and you start celebrating. It makes a lot of difference. It really makes a lot of difference. When you practice this dharma, it really makes a difference and you will feel liberated. The most important thing is liberation. You feel liberated. So that is my humble request. Please experiment. Yes. And also, again, even though it is controversial, I know it is controversial, but I will tell it. At any given point of time, in any lifetime, the only obligation you have is to be truthful to yourself. You should always follow your swadharma. At any point of time, follow your swadharma. Follow your heart.
follow your inner guidance. Okay. Okay, Meenakshi ji. Yes. Am I audible? Yes. Okay. Yes. So my question is about desires. I wanted to know this, desire to know the truth, like really know the truth, the pure desire. Is it something? How much of it is got to do with ourselves, and how much of it is through grace? One is we say, okay, yeah, I want to do this, I want to, but really to have that, because like Jesus Christ said, if you have only this desire, then there's no way you will not get it. Is the question clear? No. Okay. It's not. So the question really is that how much of this desire to know the truth is our own doing, and how much of it is grace? I mean, can we do something about it, or we kind of receive it as grace? No, see, this is an intrinsic nature. This desire to know the truth is an intrinsic nature of every human being. And God helps the people who help themselves. When you start working on yourself towards this self-realization, then definitely the universe responds to you. They support you. Okay. But when you are not working on yourself, when you are not focusing on that, then the universe doesn't respond. It is a law, it is a frequency, law of frequency. Frequency attracts frequency. You radiate that frequency that you want to know the truth. So that frequency attracts all the angels, all the higher masters, your spirit guides to support you in that process. Law of attraction, law of frequency. So you don't need God's grace, but God's grace comes to you very naturally. You don't need to ask God for the grace, but God's grace comes to you very naturally when you are truthful and authentic. Does it make sense? No, it just makes sense. I mean, it definitely makes sense. Okay, I'll answer it in another way. Don't worry about or don't think about God's grace. God's grace happens very naturally because God will do his dharma. It is his duty to support you. But are you supporting yourself? Swadharma means going inwards. When you are ready to go inwards, when you are in the process of going inwards, when you are doing your Swadharma, then very naturally the grace is upon you. Okay, so the first step is Swadharma. Are you doing your Swadharma? That is the first step. When you take the first step, then the second step follows. The second step never happens first. First is the first step. So for the people who are in the path of meditation, for the people who have the true desire of the self-realization, they have already taken the first step. So that means when I say they have taken the first step, that means they are sincerely dedicated their time, their effort, their energy towards the meditation process. And they are not wasting time. And they are so sincere. When they've taken that step, then naturally the grace descends upon you. Whether you ask it, whether you don't ask it, whether you believe in God, whether you don't believe in God, it doesn't matter. The grace descends upon you. Sure. So can I just ask one follow-up kind of thing? The question really was also, so let's say there's a person who does not have this desire to know the truth. And there is another person who has the desire to know the truth. Now that desire at that point, is it through something beyond us that we get it? Or that is also, or is it the journey of the soul where the soul evolution is, that's how the desire will come? It depends on at which level of evolution you are in. First, your focus is on the external desires. Once you are done with your external desires, then only you will go to the inner desire. Yeah. Okay, we'll let it be. I think I'll contemplate a little bit more about it. First, in every soul
a baby soul, an infant soul, a young soul, they have to go through the stages. You cannot expect an infant soul to have the desire of self-realization, because for an infant soul, the survival matters. Nothing else matters. For a young soul, power matters, authority matters, nothing else matters. Okay, so you cannot force them, and they are perfect. It's not like they are wrong. You should never look down upon them. You should never look down upon them. They are perfect in their desires. Everybody is perfect in their desires. But the question is, if you have the desire of self-realization, then better be aware of the other desires which will constantly pull you down. That's the whole agenda of this topic. Be aware. Okay. Thank you. Yes. Thank you very much. Shablam ka namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. We will see you again, probably in another episode. I decided that I will do one season per year. But Neetaji ne bola, no sir, two kar dena. So yes, before the end of this year, we'll do another 11 days sequence. Preferably after September, we'll do another sequence. Thank you, madam. Thank you. Lots sir. of love. Lots of love to Gyaan Bharat. Thank you. Bye bye. Thank you. Love you, sir. Thank you. फ्रेंड्स, कल मैं थोड़ा जल्दी बोल रही थी तो समझ में आ रहा था ना आप लोग को आंसर? बहुत टाइम हो जाता है तो दीप्ति ने पूछा था कि उनके ससुर जी को नॉनवेज खाने का इच्छा होती है तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो कुक करें। आ गया था ना? हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी, है ना, थोड़ा समझ लेना अच्छे से। तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, पर मुझे एक बहू होने के नाते नॉनवेज खाना बनाना पड़ता है। तो सर कहते हैं कि तुम संवाद अच्छे से नहीं करते हो। हर कोई प्यार से अच्छे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है। आप जाकर अपने फादर इन लॉ को जाके कहिए कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, पर मेरे को बहुत दिल में दुखता है क्या जब मैं आपके लिए ये नॉनवेज बनाती हूँ, तो आप मुझे इस कार्यभार से मुक्त कर दीजिए। हम अक्सर अनुमान लगा लेते हैं कि सामने वाला हमको मना कर देगा और हम नहीं बोलते हैं। तो बेटर है कि आप कोई अनुमान न लगाएं, आप उनके पास जाएं और प्यार से समझाएं। प्यार से जब हम समझाते हैं तो सामने वाला भी समझता है। और कोई भी निर्णय अभी से ही मत लो कि वो नहीं मानेंगे। जब तुम सब सही करोगे, सही सोचोगे, तब आपके साथ भी सब कुछ सही होगा। फिर उन्होंने दीप्ति ने ही पूछा था कि मैं मेडिटेशन और घर के साफ करने के बीच में, दोनों के बीच में चुनाव करने में मैं समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ और मेरे पास थोड़ा ही समय रहता है। तो उस समय मैं ध्यान करना ज्यादा पसंद करती हूँ। इसके कारण कभी कभी मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हूँ। तो मेरे लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? तो सर ने कहा कि पहली प्राथमिकता आपकी मेडिटेशन ही होना चाहिए, ताकि मेडिटेशन के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लें और फिर इस तरीके से आप अपने घर को भी संभाल के रख पाएंगे। हाँ, सर ने पूछा था कि जो धर्मो रक्षिता वाले का आप कैसे एग्जाम्पल देंगे? तो सर ने कहा कि आप खुद एक उदाहरण बनिए। जब भी आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। वो आप इसके लिए एक प्रयोग करिए। मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मेरी अच्छी खासी कमाई थी ऑस्ट्रेलिया में, पर जब मेरी अंदर की आवाज ने कहा कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म सिर्फ मेडिटेशन सिखाना है, तो मैंने अपनी इनर वॉइस के कारण अपने जॉब को छोड़ दिया। और मैंने तब नहीं सोचा कि मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी कार का पेट्रोल कौन भरेगा, मैं कैसे खाना पीना खाऊंगा। मैंने सर्वाइवल वाली जो जीने की जितनी भी खर्चे हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और मैं निकल पड़ा मेडिटेशन सिखाने के लिए। जब वो 2-2.5 साल मेडिटेशन की साधना कर रहे थे, तब वो अपनी जमा पूंजी को यूज कर रहे थे। पर जब मेडिटेशन सिखाने के लिए आगे गए, उस समय क्या सर बता रहे हैं कि जब मैं मेडिटेशन लोगों को देने के लिए चला गया
तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का फर्ज होता है हमें महंगाई भत्ता और सैलरी वगैरह सब दे, हमारा ख्याल रखे। तो ये भी तो मैं एक ईश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा बॉस जरूर चेंज हो गया, एक संसारी पुरुष से बदलकर एक ईश्वर हो गया है, तो अब वो ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो मेरा भरण पोषण करे और मेरी देखभाल करे। और यकीन मानिए कि मैं थोड़े ही टाइम में मैं जितना ध्यान बांटता गया, मेरी समस्याएं अपने आप, मेरी जरूरतें पूरी होते चली गई, समस्याएं नहीं जरूरतें। मुझे अच्छे से अच्छे भोजन कराने लग गए लोग, मुझे गिफ्ट के तौर पे अच्छे अच्छे कपड़े देने लग गए, कई लोग मेरे लिए टिकट्स का बंदोबस्त कर लेते थे, और कई लोग कहते थे कि आप और लोगों को भी ध्यान सिखाइए और लोगों को भी मेडिटेशन पहुंचाइए, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो वो मुझे पैसों के द्वारा भी हेल्प करने लग गए। तो देखिए, मैं जितना धर्म का पालन करते गया इस 8 सालों में, मुझे लोगों ने कपड़े और प्यार और टिकट्स और डोनेशन सब तरीके से मेरी जरूरतों का भी ख्याल रखा। जब मैं जॉब करता था तो सिर्फ 1 या 2 देशों में ही जाके मेडिटेशन सिखा पाता था, परंतु जॉब छोड़ने के बाद जब मैं 24 घंटे अपने ईश्वर के काम में लग गया तो मैं 3 से 4 देशों में भी यात्रा करके ध्यान सिखाने लग गया। जो मैं अभी खाना खाता था, पहले जो मैं खाना खाता था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट मुझे लोगों द्वारा परोसा जाने लग गया। तो हम जो भी धर्म करते हैं, हमारी धर्म हमारी रक्षा करते हैं। अभी भी मैं सिंगापुर में रहता हूँ, जो सबसे महंगी देश माना जाता है दुनिया का, पर अभी भी मेरे लिए मेरा धर्म रक्षा कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि धर्म रक्षा सिर्फ मेरे लिए कर रहा है, ये हर इंसान के लिए हर जगह रक्षा करता है, ये परम सत्य है। आप भी एक एक्सपेरिमेंट करिए अपने जीवन में और एग्जाम्पल क्रिएट करिए, एक उदाहरण बनिए। सर को किसी ने पूछा था कि मैं इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं 21 साल से ध्यान भी सिखा रहा हूँ, तो मुझे उनसे फिर उन सर से उन्होंने पूछा था कि आपको कैसे आपकी जरूरतें पूरी होती थी। तब सर ने उनको कहा था कि देखिए, मैं मेडिटेशन करता था और लोगों को मेडिटेशन बांटता था, पर मैं नीड मेरी पूरी होती थी, मेरे में कोई वासना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, डिजायर वांट नहीं था, सिर्फ मेरी जरूरतें थी और मेरी जरूरतें अच्छे से पूरी होने लग गई। तब सर ने कहा कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मांग करते हैं। दूसरे जो विकसित आत्माएं रहती हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर मुझे जो भी देगा वो मैं स्वीकार कर लूंगा। तीसरी जो अत्यधिक विकसित आत्माएं होती हैं, वो कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई भी ये भी नहीं सोचती कि उसे ईश्वर देगा तो मैं स्वीकार करूंगा, वो सिर्फ साक्षी भाव में रहती है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि जो भी मेरे द्वारा इस दुनिया में कल्याण का काम होने वाला है वो मुझे दे दिया जाए। वो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, उनका पूरा ध्यान अपने सेवा के लिए रहता है। तो वो ऐसे व्यक्ति लोग एबंडेंस में रहते हैं, जो पूरे समय 24 घंटे अपने सेवा के लिए रहते हैं, वो हमेशा एबंडेंस में रहते हैं। मैं भी हमेशा एबंडेंस में रहता हूँ, एबंडेंस कहना चाहिए, धन वैभव में रहता हूँ। मेरे धन वैभव और एबंडेंस का कहने का अर्थ ये नहीं कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं। मेरा कहने का अर्थ है जब मन संतुष्ट होता है, माइंडसेट से मैं इसको संबंधित कर रहा हूँ, कि जब आप मन से संतुष्ट रहते हैं और आपकी जरूरतें भी पूरी होती हैं, आपकी कोई मांग नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, तो वो हम वैभवशाली रहते हैं। मतलब मन से हम तृप्त और खुश रहते हैं। फिर सर ने कहा कि जब आप सेवा करते हैं तो आपको कोई भी चिंता नहीं रहनी चाहिए, आपका काम है सिर्फ आप सेवा के प्रति अवेयर रहिए। ये बहुत ही सिंपल है और आप अपने स्वधर्म को ही प्राथमिकता दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं एनलाइटन हूं कि नहीं। तो सर ने कहा कि आप ये क्यों ध्यान दे रहे हैं कि मैं एनलाइटन हूं कि नहीं, आपको कोई टैग की, कोई बैच की जरूरत नहीं है, कोई डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये अच्छा है कि आप रोज अपने आप से पूछते रहिए कि मैं एनलाइटन हूं कि नहीं।
ऐसे पूछने से आप जमीन से जुड़े रहेंगे, आप आकाश में नहीं उड़ेंगे, आपको ये गलतफहमी नहीं हो जाएगी कि आप एनलाइटेड हो गए। तो जब आपको ये गलतफहमी नहीं रहेगी तो आप रोज अपने जीवन में अपने ऊपर काम करते रहेंगे। आप चाहे अरिहंत हो, चाहे बोधिसत्व हो, जो भी हो, आप हमेशा अपने काम को अच्छे भाव से करते रहिए और जो भी काम से आपको खुशी मिलती है उसको आप करिए। एनलाइटमेंट है या नहीं, इसका जो एक बेंचमार्क है वो है जो व्यक्ति 24 घंटे खुश रहता है वो ही एनलाइटेंड है। पर यह हमारे लिए मायने नहीं रखता, बस हाँ आप अवेयर रहिए अपने खुशी और अपने सेवा के प्रति। किसी ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर लेती हूँ। मीटू ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को प्रतिक्रिया नहीं करूं, पर मेरे को बाद में पछतावा होता है, तो मैं क्या करूं। तो सर ने कहा कि अच्छा है, आप अपने लिए अवेयर हो गई हैं और अपने को जज मत करिए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस आप अपना सर्वश्रेष्ठ करिए और जज मत करिए। फिर शीतल ने PLR से के लिए पूछा था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर हम कोई लेसन पढ़ लेते हैं तो क्या वो हमारा कार्मिक अकाउंट से बाहर चला जाता है। तो सर ने कहा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के खिलाफ हूँ। अगर आपके कोई इमोशन या कोई चीज आपको लेसन पढ़ना हो तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं और उस समय आप सीखते हैं, आपके इमोशन रिलीज होते हैं, तो वो आपकी परमानेंट हीलिंग होता है। पर यदि आप किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा, क्योंकि उसने पूछा था कि कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में जाकर उसी क्षणों को फिर से जीने से हम उस इमोशन से या उस गिल्ट से हम मुक्त हो सकते हैं या उस डर से मुक्त हो सकते हैं। तो सर ने कहा था कि पहली बात तो ये है कि वो टेम्पररी इलाज है। पास्ट लाइफ से जो ट्रीटमेंट कराया जाता है, चाहे फियर का हो चाहे इमोशन रिलीज का हो, वो टेम्पररी रहेगा। और पहली बात तो आप किसके पास जा रहे हैं, क्या वो प्रशिक्षित है और क्या वो आपको वाकई हिप्नोटाइज कर पा रहा है या आपको इल्यूजन में डाल रहा है। और जो भी आप अपने आप को अलाउ करती हैं किसी को भी अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए, तो आप अपने फ्यूचर लाइफ पर भी प्रभाव डालती हैं। परसिवल ने साफ शब्दों में कहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जाने से आपकी फ्यूचर लाइफ भी खराब हो सकती है। फिर शीतल ने पूछा था कि आप कहते हैं कि सही गलत के बियॉन्ड जाना चाहिए, हमको पार जाना चाहिए, पर आप कहते हैं गुड कर्मास और बैड कर्मास, तो आप तो बिल्कुल विपरीत बातें कर रहे हैं। तो सर ने कहा मैं विपरीत बातें नहीं कर रहा हूं, मैं विरोधाभासी बात कर रहा हूं, ऑपोजिट नहीं, पैराडॉक्सियल। पैराडॉक्सियल मतलब विरोधाभासी। तो सर ने कहा यही तो सत्य का पहलू है, हर चीज यहाँ पर पैराडॉक्सियल है, मतलब हर चीज विरोधाभासी है, सत्य भी विरोधाभासी है। जैसे अभी एक तरफ पृथ्वी के एक तरफ सूरज उगा है, दूसरी तरफ अंधेरा हो गया है, तो आप कहेंगे कि सत्य है क्योंकि यहाँ पे सुबह है, परंतु अमेरिका वाला कहेगा कि बिल्कुल ये सत्य है कि अभी अंधेरा है। तो दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों के लिए सत्य है, यहाँ सवेरे है वहां रात है। पर जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर से देखेगा, ऊपर से पृथ्वी को जब देखेगा, तो वो देखेगा कि पृथ्वी आधे तरफ सूरज है और आधे तरफ अंधेरे में है, मतलब आधे तरफ रात है आधे तरफ सुबह है। तो उसके लिए सत्य होगा कि हाँ प्रकाश भी है अंधकार भी है, पर हम पृथ्वी पर रह के पैराडॉक्सियल हम महसूस करते हैं। पर जब हम उसके बियॉन्ड जाते हैं, सही गलत के कि अमेरिका वाला सही है कि इंडिया वाला सही है, कुछ नहीं, आप जब उसके बियॉन्ड पार चले जाएंगे तो सभी चीजें आपको सत्य लगेंगी। आपको लगेगा अमेरिका वाला भी सत्य बोल रहा है, इंडिया वाला भी सत्य बोल रहा है, विरोधाभासी है। तो उन्होंने इतना सुंदर एग्जाम्पल देके सर ने कितने प्यारे तरीके से कहा कि देखिए बिल्कुल ऐसे ही सत्य है, अगर आप अच्छे कर्म करते जाएंगे तो वो एक सोने की जंजीर है, आपको उसको भोगने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बुरे कर्म करेंगे तो आपको भुगतान देने के लिए, अपने ऋणों को चुकाने के लिए फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है, पर जंजीर तो जंजीर ही है, आपको तो पृथ्वी से मुक्ति मिल नहीं सकती। तो सबसे अच्छा है जो हमारी गीता में भी कहा गया है कि आप उन दोनों के पार चले जाओ, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के दोनों के पार चले जाओ। यही धर्म है, सिर्फ साक्षी भाव में रहना है।
अगर आपको मुक्त होना है तो आपको गुड और बैड कर्मास के बियॉन्ड जाना है, आपको सोल कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस में रहना है, साक्षी भाव में रहना है। और परसिवल ने भी फिर से उन्होंने कुछ बात पे कहा था कि परसिवल ने भी कहा है कि अगर आप किसी को अनुमति देते हैं कि वो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे तो आप अपना पावर उसको देते हैं, तो आप बिल्कुल मत करिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से हमारी सोच नहीं बदलती, हम पाठ नहीं पढ़ लेते। अगर पाठ पढ़ भी लिए, चलिए मान लीजिए आपको मालूम चल गया कि ये मैंने बुरे कर्म किए थे इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, आप उस समय पढ़ लेंगे, पर वो आपकी परमानेंट हीलिंग नहीं है। परमानेंट हीलिंग जब आप इनर अपने दिल से आप उस लेसन को समझेंगे कि यस यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो उन्होंने कहा है कि आपकी सोच जो है वो आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं बदलेगी। आपको एम्पावर होना है, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होना है, तभी आप उससे परमानेंट हीलिंग करेंगे। और ये सिर्फ आपको मेडिटेशन में रहेगा, इसीलिए मेडिटेशन की तरफ ही आपको ध्यान रखना चाहिए। एक ने कहा था कि मेरे पति मुझे कुछ बोलते हैं, मैं अवेयर नहीं रह पाती हूँ, ऐसा ही, और एक्सपेक्टेशन है। तो सर ने बहुत ही अच्छे से आंसर देके कहा कि एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की उपज होती है। आप जितना ज्यादा माइंडफुल होते जाएंगी, जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगी, आपको अंदर से पता चलते जाएगा कि ये मेरी अपेक्षाएं हैं, और आप दूसरों से अपेक्षाएं कम करेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा नेचर में रहिए, मेडिटेशन करिए, माइंडफुल रहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, तो दूसरों से अपेक्षाएं आपकी कम होती चली जाएंगी। आखिरी में सर ने कहा कि मैं इन 11 दिनों में आप लोगों को बेसिक रूप से ये सिखाना चाह रहा था, वो साधन में देना चाह रहा हूँ आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने का, ताकि आपकी जिंदगी बहुत ही खुशगवार हो। कभी भी आप मत सोचिए, आध्यात्मिकता का ये आधारभूत सिद्धांत है कि आप विशिष्ट नहीं हैं, आप सिंपल रहिए, स्वाभाविक रहिए, विनम्र रहिए, और अपने मेडिटेशन को आप नियमित करते रहिए। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, तो उतना ही आप अपने परिवार को, इस संसार को सुखी सुख से भोग पाएंगे। चाहे कितने भी आपके सामने चैलेंज आए, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, पर आपको अपने विकास पर ही ध्यान देना है। किसी से भी कोई शिकायत मत करिए, जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में उसको एक्सेप्ट करते जाइए। और ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास कोई चुनौतियां नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोग को सिखाता हूँ, पर मेरे पास भी चुनौतियां हैं। लॉर्ड शिवा भी अभी तक के मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पास अपने अपने धर्म है, अपने अपने काम करने को है। तो अपने जीवन को उत्सव की तरह मनाइए, किसी से भी कोई शिकायत मत करिए, अपने आप को सशक्तिकरण करिए, अपना एम्पावर करिए, और पृथ्वी के कल्याण के लिए आप काम जरूर करिए। और याद रखिए कि आपकी जो डिजायर है वो जो सिर्फ एनलाइटमेंट की तरफ ही होना चाहिए। फिर मीनाक्षी ने पूछा था कि जो मुझे सत्य को पाने की इच्छा है, तो क्या वो सिर्फ मेरे प्रयासों से मिलेगा, या मेरे को प्रसाद के रूप में, ईश्वर से प्रसाद के रूप में या कृपा के रूप में मुझे मिल जाएगा? तो सर ने कहा कि हमारी जो ये इच्छा है एनलाइटमेंट जाने की, वो हमारे ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। और ये कहा भी गया है, इतना अच्छा स्टेटमेंट है कि जो इंसान अपनी खुद की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो जब तक कि आप अपने ऊपर प्रयास नहीं करेंगे, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी अपने समानी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है, तो जितना ज्यादा आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, उतने हायर मास्टर एंजल्स आके आपकी मदद करेंगे। आप ईश्वर को नहीं जानते हैं, पर उसके बावजूद जब आप अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, मेडिटेशन और गुड कर्मास करते जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही। ये मत सोचिए कि ये ईश्वर पूरा करेगा कि नहीं। आप अपना धर्म पूरा करिए, अपनी अंदर की यात्रा अच्छे से करिए, अपना स्वधर्मा पूरा करिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम आपका खुद ही बढ़ेगा।
तो पहला कदम है हमारा मेडिटेशन शुरू करना, पर इसके लिए आपको निरंतर निरंतर अपने ऊपर प्रयास करने हैं। मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स वगैरह वो सब आपको अपने ऊपर काम करते जाना है। इसके द्वारा ईश्वर अपना धर्म पूरा करेगा और आपकी मदद करेगा। आप चाहे मांगो या न मांगो, ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, सत्य को पाने की इच्छा हमारी भी होती है, तो क्या हर आत्मा की होती है? उससे ही रिलेटेड था। तो सर ने कहा कि सत्य को जानने की इच्छा आत्मा के विकास के स्तर पर रहता है। हर आत्मा का अपना अपना स्तर होता है। जैसे इन्फेंट सोल है, वो सिर्फ अपने शरीर और संसार के सुखों की तरफ ही ध्यान देगी, उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, कोई मायने नहीं रखेगा। या यंग सोल भी है, उसके लिए कोई ईश्वर और कोई सत्य उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए पावर इम्पोर्टेंट है, पर वो अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। उनको हे दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। जब हम मैच्योर या ओल्ड सोल, सॉरी नॉट मैच्योर, जब हम ओल्ड सोल में आते हैं तो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की इच्छा तीव्र होती है और केवल तभी आपकी, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाता है कि संसार की इच्छाएं टेम्पररी हैं, आपके लिए कोई फायदे की नहीं रहती है। तब आपके पास सिर्फ एक यही ट्रू डिजायर रहती है, सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन या सत्य, मोक्ष कहो, सत्य कहो, निर्वाण करो कहो, परमात्मा कहो, जो भी नाम दो वही है एक। तो वहां पर जब आपकी संसार की इच्छाएं से आप क्या कहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं, तब आपके पास यही एक इच्छा रह जाती है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, मैंने जल्दी जल्दी जरूर बोला, पर मेरी भी मजबूरी है ना, मेरे भी धर्म है और मुझे भी धर्म निभाना जाना है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और आप लोग मुझे ग्रैटिट्यूड मत दिया करिए कि प्रदीप सर को लेके आई। जैसे प्रदीप सर अपना धर्म निभा रहे हैं ना, वैसे मैं भी ज्ञान भारत के सामने बैठकर मैं भी अपना धर्म निभा रही हूँ। तो नो ग्रैटिट्यूड फॉर मी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड उनको दीजिए जिन्होंने अपना 11 दिन दिया। सर को हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे। ऐसे लग रहा था कि लोगों ने फुर्सत में बैठ के, मतलब कॉपी पेन लेके फुर्सत में क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत कम मुमुक्षु क्वेश्चन थे। मुमुक्षु क्वेश्चन मतलब जहां पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, कहाँ है सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी। अब ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, आप लोग बुक्स पढ़ना शुरू करिए। जब तक कि आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे। तो मेडिटेशन, बुक्स पढ़िए, आपको एक एक बुक से हजारों आंसर मिल जाएंगे। पर उसके बावजूद जो सर छोड़ के गए हैं और जो मेरे हिस्से में 30-35 क्वेश्चन हैं, वो मैं कोशिश करूंगी कि कल परसों छोटे छोटे जो आप लोग के बेसिक वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जितना हो सकेगा मैं करूंगी। और बाकी मंडे से हम अपने रेगुलर क्लासेस करेंगे। तो विदा लें फ्रेंड्स। अब मैं बिल्कुल हैंड रेज वाला नहीं लूंगी। प्लीज शशि गुप्ता जी, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए, है ना। थैंक यू शशि जी, बहुत प्यारे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, समझते हैं कि अनीता मैम को भी छुट्टी चाहिए, है ना। चलिए कल मिलते हैं 4 बजे, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासपोर्ट और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बाय बाय। थैंक यू लव यू। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।